संसार हो अतिमोक्षतम जीवन बने परमात्म में व्यवहार हो नाम हमको सभी से गर्ज है गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है हम हो जारी तत्व के गुरुदेव के आशीष के सच प्रेम के नेम के सधर्म के सत्कर्म के हो चोटी राह की अन्याय की अभिमान की सेवा करने को दास की परवाह नहीं हो जान की छोटे ना से हो विश्व में श्री ईश्वर में हो राम में और कृष्ण में जगदेव में जगदीश में हर इंद्रियों पर ताप कर हम वीर हो अति धीर हो उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रथ कंपी अति शुद्ध हो चारि से तन मन अपार सर्वदा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे घर मौत भी आ गई सुख दुख हमसे सम रहे. Thank you all. Good afternoon all. As you are aware, today we are taking the topic on technical guide on the audit of NBFCs, and we have our keynote speaker with us, Sri Lalit Kumar. So I would rather request Tanisha to please introduce him first, and then I request directly Lalit Kumarji to please give the overview of the audit of the NBFCs. So Tanisha, over to you. Thank you, sir. I'm pleased to welcome CA Lalit Kumar from Delhi in our Saturday class. Sir is the partner at Walker Chandiok and Company LLP, a part of the Grant Thornton. Sir was also a senior manager at BSI. He was also a senior technical officer at ICAI. Sir is an expert in the banking and financial services and insurance sector, and he was also a part of the AASP at the time of framing of this technical guide on NBFCs that will be discussed today. So, it's an honor to have you here with us, and we look forward to get those useful insights from you. Thank you so much. Thank you, Bhupendraji. Thank you, Tanisha. I got your name correct, right? For the introduction. Right. So, yeah. And I'm really glad to be here. When Bhupendraji told me that he organizes this webinars where young chartered accountants come and take up topics. And I expressed my eagerness to be part of it. And he said that this topic is coming up. NBFCs as a topic is personally very dear to me in the sense that most of my career, I have audited NBFCs, banks, and financial institutions. I'm happy to be here and eagerly looking forward to what the presentations are going to be made here in this. As a keynote speaker, for this program, I think I only have few things to say to this audience. The first and foremost is that NBFC business in our country is flourishing, is a very key component of the country's dream of financial inclusion. They serve, a very large population of the country, people who are not able to access regular banking, are serviced by non-banking financial companies. And most of the cases, these NBFCs are a great contributor to our
financial system also, right? They carry a risk as well because NBFCs do borrow money from banks, whether they are systemically important or not. Systemically important is governed by a size, but even if an NBFC has just borrowed 50 crores from a bank, to me, it always will be a systemically important company because it is important that when we audit the NBFCs, we are able to take care of the bank's money that has gone into. Plus, there are other shareholders and other stakeholders who get involved. Auditing NBFCs today has become a little challenging, right? And why I say little challenging is because of the use of technology that has gone into the business of NBFCs. Every NBFC today is trying to move to technology for lending, is trying to, when I say lending, it's underwriting, is trying to move to technology for disbursement, for collection, for everything, right? Right from sourcing of the customer to underwriting, to disbursement, to collection, and even for that matter, management. And I will give you a brief insight on how quickly underwriting can happen today, right? And how does it happen? Depending on the type of NBFC, whether it is into uh, an unsecured lending business or a secured lending business, it could be in a business loan scenario or personal loan scenario, credit cards or housing loan or gold loan, any type of NBFC, right? Now, today, if I want a personal loan, okay, of XYZ amount, I can go to a website like pesalo.com or pesabazar.com and I can put my need. It will throw up a lot of options. I may choose an NBFC or a bank or any other financial institution to lend me a loan, but the market is all about aggression, right? How fast you lend. Now, it is quite possible that I might want to transact with an NBFC and I select that I want to apply for a loan. I will simply put in my particulars there on the website, name, phone number, email address, a basic KYC. I'll receive a link to say download this application on your phone. And some questions the application will ask, I will agree to the terms and conditions of the business. The technology is such that NBFC will read all the contents of my phone. Okay. And will be able to build a credit profile. That this person's, we've seen messages coming in the message box to say salary of X has been credited. This is the amount of expense that this person incurs. These are the relatives, these are the contacts. They will get every possible detail and will exactly know what the credit profile is. Make a credit decision based on a grid that is used, and then immediately an offer will throw up to say, upload your Aadhaar card. If you agree to the terms, we are willing to lend you 15 lakhs at this rate of interest. All this is pre-fed, right? And your EMIs will start from this, we will start debiting. Technology. If you want to audit an NBFC, here is the entire set of technology that you need to see. And then, of course, when you transact, loan gets disbursed, there is an automatic entry that is going into the general ledger, and there is a account that gets set up, EMIs get set up, interest income recognition, everything is automatically running in a fully automated NBFC. So that's the extent to which the automation has gone. Same is the case with banks also. If you want to take a loan, apply on a website,
If there is a pre-approved loan, you simply just fill in the details and you will get. So having an understanding of the technology right from initiation till the end, how it is affecting, what are the tests that you are going to do, is the biggest change that has happened in the. So get into audit of NBFCs, but also come with lot of IT open-mindedness to understand how transactions are getting processed. That is the first thing. The second thing I would say is the regulatory environment. When we look at, regulatory environment for us as auditors or chartered accountants comprises the institute and an NFRA. And the regulatory environment from the RBI side, which is the prime governing body for non-banking financial companies. The regulatory environment further gets more complex if the NBFC is listed, so you add on SEBI also. And of course, all NBFCs are required to be the Companies Then Companies Act. Right? As an auditor, when you are auditing NBFC, you will have to see what all laws and regulations are applicable to the entity and how these are being complied with. The second thing is, if you are auditing an NBFC that is covered by NFRA, I guess all NBFCs get covered by NFRA. You will have to make sure that, irrespective of NFRA not being there or there, have to make sure that you are able to comply with the auditing standards. When we talk about the regulator out being there, that does not necessarily mean that you start working in a manner to defend yourself before regulator. That is not the approach that I subscribe to. I think the overall approach has to be to ensure that you are complying with the standards on auditing and accounting standards and whatever else is applicable based on full competency, but not with fear of regulator. So that's the other thing that one has to keep in mind when you are auditing NBFC. Regulators are very keen to have good quality audits done for NBFCs, and this is quite evident from the changes that we have seen that have occurred in the NBFC field. And the changes have been happening since last 5, 7, 10 years. We see the oldest and the first change that was brought in was the classification of NBFCs, systemically important, non-systemically important. Then I think RBI went into clarifying or bringing in the concept of core investment companies, where they classified, they qualified or they carried all the characteristics of being NBFCs, but entities were not getting registered as NBFCs because they were just investment companies. So concept of core investment companies came in. Then I think for a number of years there has been talk about level playing field between banks and NBFCs, and hence the regulations for banks and NBFCs should be similar. To some extent, these have been aligned. Then came the requirement of maintaining capital adequacy ratios and enhanced capital adequacy ratio in a staged fashion for different types of NBFCs. So regulator has been strengthening, and the biggest change that occurred for NBFCs was when RBI announced that whichever NBFC gets qualified will have to comply with Ind AS requirements. That was the biggest change. I think for banks, it is still not there. RBI is contemplating, but for NBFCs, this accounting standards change was a very big thing. So when you are auditing, I think very good understanding of the accounting standards and how those standards are applied in NBFCs vis-a-vis the regulations of Reserve Bank of India. So income recognition, prudential norms, whatever RBI has prescribed, and how Ind ASs are applied in those circumstances. That also becomes very important. When I said that
RBI per se expects a very good quality of assurance. This is indicative of the fact that, and RBI has been working on it. I mean, the first regulation that they that they implemented was that the audit engagement partner of an NBFC must change every 3 years. For a systemically important NBFC, must change every 3 years. So where you are appointed for a 5-year period, a partner has audited for 3 years. Now that partner cannot audit, another partner has to be deployed, and that partner audited NBFC. As the time passed, as we started complying with this, both fraternity and the companies became familiar that this is going to happen. There came a new regulation which said that you cannot continue as auditors after 3 years, and then there is a cooling off period for 6 years. First change. Second change is, as a firm of chartered accountants, you will not be allowed to audit more than 8. All these changes are, and coupled with that, I think once you end your audit tenure, then there are some rules around rendering of non-audit services. There are some rules around rendering of non-audit services prior to becoming the auditor. All this is to ensure that fresh pair of eyes look at the company's financial statements every 3 years so that there is no complacency or familiarity threat that plays on the audit opinion. The requirement to remain independent or whatever the way they have been written is to ensure that it is carried out with utmost objectivity. Therefore, regulator is clearly in a mood, or clearly expects from the profession that a very good audit will be done. I think beyond this, everything is technical. I don't want to steal the thunder from the speakers who are going to, talk about their topics to be covered in the presentation. The only last thing I would say is understand the entity that you are operating inside out. What is the kind of business they do? What is the kind of customers they deal with? What is the level of governance that entity has? Because NBFCs deal with a commodity which is called money, and it's most susceptible to fraud. And fraud not only of misappropriation of assets, but also of financial reporting fraud, which means there could be schemes that the company may run to make sure that the loan book always looks green, right? Which means that there are no bad debts. Some of the methods that they deploy is refinancing the old customer, right? So if a loan is the customer is not able to pay 3 installments, they will open up a fresh loan, give him that fresh loan, utilize that fresh loan to pay up the old installments and make it as a performing asset rather than a non-performing asset or a credit impaired asset, and continue to show a good book, which is essential for them to borrow more. It becomes a trap sometimes for the company, then very difficult to survive if this is the practice. So understand the business inside out, look at the governance, look at the existence of fraud triangle when you are auditing, do a really good job, understand technology. I think these are the few things that I felt are important that one must keep at the back of the mind when auditing an NBFC. And last thing that I always advise everybody, irrespective of the fact that you are auditing an NBFC or a manufacturing entity or any other entity, the importance of consulting with somebody senior, with a peer chartered accountant, maybe outside the firm without, divulging any confidentiality requirements as are applicable in our audits. But if you are seeing something for the first time, do your own research, try and form your own view on the particular issue or a particular matter. But it is always good
to call up another person, more experienced person, or a fellow chartered accountant or colleague, and this is the problem. This is what I'm thinking to, solve, and take inputs and solve that problem, right? Rather than saying that somebody has told me this can be done and you do that. Simply don't replicate it. Solve the problem, understand, and don't shy away from consulting your, colleagues and others, but without compromising on the confidentiality requirements. I think that is what I could think of to talk about. Very keen to listen to the speakers who are going to take up these sessions. Over to you, Bhupendraji. But thank you so much for the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much. And in fact, I always cherish the moments I have discussion with you, whether it was AASB or whether it was Glopec where we met last week, and whether it is today. So you are always, come with the lot of knowledge to discuss. And as you rightly said, sir, technology, firstly, as you mentioned, that technology is very important because as of days, almost all NBFCs are basically working and their entire operations are through technology only. So, and that is why they are now called fintech. That is the major reason. And of course, regulatory environment, auditing standards, uh, and understanding of the entity. These are the three things which you have mentioned that one need to utmost take care while performing the audit. And this should not be for the purpose of just formality that yes, how we can save ourselves. Rather, it should be in actual sense. So that is something which everyone should understand while doing the audit of NBFC, and for that matter, for any other entity. Today, we have our partner also with us, Gaurav Rawat, who deals with the audit of NBFC in our firm. And all the three speakers are experienced to either do the audits of NBFC or do some of the Ind-AS conversions. So accordingly, we kept the team of only those persons who are actually experienced with the NBFC so that they can explain their presentation in a better way. So I request Gaurav to please start the initial discussion, and then all other speakers can please go forward on this. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, Lalit sir. Thank you. Good afternoon. So basically, today's discussion is on the guidance of note with respect to the NBFCs, other the test guide, in which we have taken three speakers who will be taking their part one by one, starting with introduction, then audit part, and basically what are the major later observations or other major tests what we used to take in NBFCs with respect to IRIC norms, with respect to Ind-AS implementations, what are the challenges being faced while doing the audit of an Ind-AS financial statement of NBFCs. So these are the basic things that would be covered in the topics that the students have taken. So starting with the introduction part first, which Mansi will be taking, I guess. So Mansi, you can start. Good afternoon, everyone. Let's start our discussion on technical guide on audit of NBFC. Basically, पहले इसका scope क्या है अपन ये देखते हैं. It is applicable to all audit of NBFC और ये basically assist कर रहा है auditors को RBI की implementations करने में, RBI की जो guidelines है, notification है, उसे कैसे अपन implement कर सकते हैं, कैसे check कर सकते हैं, standards on auditing को कैसे follow कर सकते हैं कुछ NBFC specific points के लिए, या फिर AS accounting standard या Ind-AS जिस NBFC पे लग रहा है उनके लिए कैसे कर सकते हैं वो ये बताता है. Let's start with the introduction. Basically, पहले ये देखेंगे what is an NBFC. NBFC is a non-banking financial company which is engaged in giving loans
और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, या फिर ऐसी एनबीएफसी जो लीजिंग या बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर हायर परचेज बिजनेस में इन्वॉल्व है। बट स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड किया हुआ है, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बिजनेस में है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बिजनेस में है या परचेज ऑफ शेयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है, वो एनबीएफसी से एक्सक्लूडेड है। अब बात आती है अगर एनबीएफसी लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है तो एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या है। बेसिकली एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, कुछ एनबीएफसी है जो डिपॉजिट ले सकती है बट डेट टू टर्म डिपॉजिट ले सकती है, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। सेकंड, एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनती है क्योंकि ये फाइनेंसिंग करती है, ये किसी से एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड थर्ड पॉइंट, जो एनबीएफसी है वो चेक्स इशू नहीं कर सकती है, जैसे बैंक से अपन चेक इशू करके अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एनबीएफसी को रेगुलेट आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू करता है, जैसे जो कि इनकम रिकॉग्निशन या एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स बताता है, एनपीए कैसे क्लासिफिकेशन करता है वो बताता है, और मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज भी आरबीआई ही करता है। नाउ comes the compliance. Basically, NBFC में जो आंसर रहेगा, there can be two sort of NBFCs. One is deposit acceptance NBFC and the one is non-deposit acceptance NBFC. Right now, जो इंडिया में new incorporations हो रहे हैं, that is non-deposit acceptance NBFCs. Deposit acceptance NBFCs में भी जो banks deposits related work करती है, वो NBFCs नहीं कर सकती. Only they can have public money with them and that can be by way of term deposits. तो वैसा नहीं हो सकता कि कासा अकाउंट खोल ले एनबीएफसी और उसको ऑपरेट करा ले, इट्स नॉट लाइक दैट। वो काम बैंक का ही है, वो बैंक ही करेगा। तो ओनली बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू इज दैट दे कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट बाय वे ऑफ एफडीआर एंड अदर डिपॉजिट्स एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर लेंडिंग पर्पसेस, दैट टू विद अ लाइसेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एनबीएफसी। Now comes the compliance with section 45 IA of RBI Act. This says that every NBFC requires compulsory registration, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट में इशू होता है। एंड एवरी एनबीएफसी नीड टू मेंटेन अ मिनिमम नेट ओन फंड, जो कि नेट ओन फंड बेसिकली होता क्या है, इट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स। शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी, फ्री रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम अकाउंट, दिस विल कम। अब मिनिमम आरबीआई ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है लिमिट वो 2 करोड़ है, जो कि फेज मैनर में 2027 तक 10 करोड़ तक इंक्रीज हो जाएगा। बट इस 2 करोड़ के लिमिट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मोर्गेज गारंटी कंपनीज जो होती है, जो बेसिकली मोर्गेज गारंटीज के बेस पे फाइनेंसिंग करती है, उसका मिनिमम नेट ओन फंड 100 करोड़ है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए ये लिमिट 20 करोड़ है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी है, एनबीएफसी या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, मतलब 75% जो उनका लोन्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स रहते हैं, उसके लिए मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट इज 300 करोड़। एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग बेसिकली एक इंटरमीडिएरी होती है जो कि लेंडर्स और बोरोवर्स को मीट कराती है, डायरेक्टली खुद फाइनेंस नहीं करती। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, ये एक एनबीएफसी होती है जो फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है कस्टमर्स की, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो कब एक कंपनी को बोला जाएगा कि वो एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आरबीआई ने 50-50 टेस्ट बताया है। इट हैज 2 कंडीशंस, वन रिलेटेड टू असेट एंड अदर रिलेटेड टू इनकम। असेट रिलेटेड में ये है कि जो फाइनेंशियल असेट्स होगी उस कंपनी की, वो मोर देन 50% होनी चाहिए टोटल असेट्स के। एंड टोटल असेट्स जब अपन लेंगे इस कैलकुलेशन के लिए, दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द इंटेंजिबल असेट्स। एंड द फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल असेट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। अब ये जो 50-50 रेशियो है क्राइटेरिया, वो कुछ एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने अलग से प्रिस्क्राइब कर रखा है, जैसे कि असेट फाइनेंस कंपनीज है जो बेसिकली असेट एक्विजिशन के लिए लोन्स देती है, उसमें जो उनके रियल और फिजिकल असेट्स हैं बिजनेस के, वो मोर देन 60% होनी चाहिए टोटल असेट्स के, और जो उनसे इनकम हो रही है वो मोर देन 60% ऑफ टोटल इनकम होनी चाहिए। सेम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, बेसिकली ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देती है रोड, ब्रिजेस, पोर्ट्स बनाने के लिए, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होने चाहिए वो मिनिमम 75% ऑफ टोटल लोन्स होने चाहिए, और उनसे जो फाइनेंशियल इनकम हो रही है वो मोर देन 50% होनी चाहिए। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एसेट्स है, वो शेयर्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है दूसरी कंपनीज के, और उसमें से भी ग्रेटर देन 60% जो है वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए, सिक्योरिटीज में। और फैक्टरिंग बिजनेस कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जिनका फैक्टरिंग की इनकम मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। 50-50 टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी होगी अगर अपन इसको सोचें कि व्हाई दिस 50-50 टेस्ट इज रिक्वायर्ड। सेक्शन 45 आई स्पेसिफिक बोलता है रजिस्ट्रेशन लेंगे और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हम एनबीएफसी चला सकते हैं, ठीक है। तो 50-50 टेस्ट क्यों
किसी के थॉट में आया होगा कि देयर शुड बी 50-50 टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी? कोई किसी का कोई पे व्यू? बेसिकली ऑपरेशंस के अंदर अगर फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशन है किसी भी कंपनी का तो वो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में जाना चाहिए, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। बेसिक पर्पस ये था कि कुछ ऐसी कंपनीज जो बाय बैकडोर फाइनेंसिंग का बिजनेस कर रहे हो या अदर मैकेनिज्म से फाइनेंसिंग का बिजनेस कर रहे हो और वो लाइसेंस ना ले रहे हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि हाउ दीज कंपनीज आर बी वर्किंग एज एनबीएफ इन नेचर ऑफ एनबीएफसी विदाउट टेकिंग द लाइसेंस ऑफ एनबीएफसी। सिमिलरली अगर अपन अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी सेक्शन 45A का स्पेसिफिक रेफरेंस दिया हुआ है कि whether this company is required to be get registered as per section 45A of this particular act। तो जो वो सेक्शन है उसमें 50-50 टेस्ट इसलिए डाला कि ऐसा ना हो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो ओरिजिनली, वो काम मैन्युफैक्चरिंग का ही करती रही हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने बिजनेस अपना डाइवर्ट करके एनबीएफसी का बिजनेस करने लग गई हो विदाउट टेकिंग द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एज पर एनबीएफसी। The only reason is that the regulatory framework of a manufacturing company or a service sector company is much lesser than the NBFC. So, because NBFC is much more regulatory than other companies. Now the consequences for non-registration. If an NBFC does not get registered under RBI, so जो person conduct कर रहा है NBFC का business, he can be liable for imprisonment for 1 to 5 years and fine for 1 lakh to 25 lakhs. अब एक फाइनेंस एक्ट 2019 में आरबीआई ने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज 45MAA, जो कि ये कहता है अगर कोई ऑडिटर रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करता जो आरबीआई ने इशू कर रखी है, तो उसको डिबार किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। बेसिकली एनबीएफसी 3 बेसिस पे क्लासिफाई होती है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज, सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंस एंड होल्डिंग एंड नॉन डिपॉजिट होल्डिंग। जैसे कि गौरव सर ने बताया कि होल्डिंग और नॉन होल्डिंग के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये जो सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंस है इसमें नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का ही बाइफर्केशन है। अगर जैसे असेट साइज 500 करोड़ और उससे ऊपर है तो वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी रहेगी, एंड अगर 500 करोड़ से कम है तो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होगी। बेसिस नेचर ऑफ एक्टिविटीज में बहुत सारी एनबीएफसीज आती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ये बेसिकली एसेट फाइनेंसिंग कंपनीज, लोन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज का ग्रुप को आईसीसी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जैसे मैंने बताया जिनका मिनिमम 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में होता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो मिनिमम 90% शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। Things पे जाएं। View all नीचे वाला view राइट हैंड साइड में तो किसका माइक पे लगा है? हो गया शायद। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिनका मिनिमम 90% शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड रहता है, और एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग जैसे मैंने बताया कि पहले इंटरमीडियरी की तरह काम करती है लेंडर्स और बोरोवर्स को मिलाने के। नाउ कम्स ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के कुछ पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन। इसमें पहला ये है कि रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है आरबीआई को, आरबीआई से एनबीएफसीज को, बट कुछ एक्सेप्शन है इनके, जैसे वेंचर कैपिटल कंपनी जो होती है वो सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए उन्हें यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। इंश्योरेंस कंपनीज है उसके लिए अलग आईआरडीए है जो रेगुलेट करता है। एक हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट रेगुलेट करता है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उन्हें सरफेजी रेगुलेट करता है, तो उन्हें यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी कंपनी जो किसी और लॉ में गवर्न हो रही है उन्हें यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। Now comes the CRAR ratio, capital adequacy ratio और capital to risk weighted asset ratio। ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करता है कि एनबीएफसी के लिए। इसमें मिनिमम रेशियो जो मेंटेन करना होता है हर एनबीएफसी को वो 15% होता है, बट जो अगर एनबीएफसी गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है तो उसके लिए मिनिमम रेशियो 12% है।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला is total capital fund upon risk weighted assets. Total capital fund is basically tier 1 capital plus tier 2 capital. इसके components अपन next slide में discuss करेंगे. Risk weighted assets में दो part आते हैं, एक on balance sheet assets और off balance sheet assets. Basically हर एक asset को एक risk weight assign कर रखा है RBI की master direction में. उसके according हर asset के value को risk weight से multiply करके risk weighted asset calculate किया जाता है. एक चीज जो पॉइंट ध्यान रखने का होता है, अगर कोई इंडेक्स फॉलो कर रही है एनबीएफसी और उसमें कोई फेयर वैल्यू गेन है तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं इस कैलकुलेशन में, बट अगर फेयर वैल्यू लॉस है तो उसे इंक्लूड किया जाता है. ऑन बैलेंस शीट असेट्स, जितने भी असेट्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं उसको रिस्क वेट असाइन किया होता है. वो ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो चेक करे कि जो रिस्क वेट असाइंड है मास्टर डायरेक्शन में वही यूज कर रहे हैं ना. नाउ कम्स ऑफ बैलेंस रिस्क वेट क्या होता होगा? शीट. तुम तीनों छोड़ दो. रिस्क वेट जनरली डिक्शनरी मीनिंग क्या आएगा? रिस्क वेट क्या होता है कि किसी रिस्क का हमको कितना वेटेज देना है. मतलब वर्ड ब्रेक कर लेंगे तो रिस्क और वेटेज का समझ मतलब कि मेरे को किसी बीच में रिस्क का वेटेज क्या देना. तो ऐसे लोन होता है कि जो भी लेंडिंग एनबीएफसी कर रही हैं उसके हिसाब से आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स डिफाइन किए हुए हैं कि आप इस तरह का लेंडिंग कर रहे हो तो ये मानेंगे कि ये इतना रिस्की है. आप इस तरह का लेंडिंग कर रहे हो तो इस तरह रिस्की है. अकॉर्डिंगली आपको कितना फंड एज अ कैपिटल एडिक्वेसी में या नेट ओन फंड में रखना पड़ेगा टू मैनेज कि आपका ये फंड्स जो है वो प्रॉपरली जो पैसा आपने लगाया है वो रिस्क फ्री हो. कि जैसे अभी लास्ट वीक 2 वीक पहले एक बहुत न्यूज चली थी कि एनबीएफसी के लिए पर्सनल लोन का रिस्क वेट बढ़ा दिया. किसी ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत आर्टिकल्स छपे थे. 125 उसका रिस्क वेट कर दिया. मतलब कि मैंने मेरे लोन से भी ज्यादा का रिस्क वेट उसमें अटैच कर दिया जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सनल लोन्स दैट एनबीएफसी आर कटिंग. तो रिस्क वेट होता है बेसिकली कि मैं किसी भी लोन में कितना रिस्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मांग के चलता है. 100 रुपए लिए 100 रुपए दे दिए, इतना ही रिस्क रखना है तो 100 का वेटेज रख दिया. सिमिलरली 100 से कम का वेटेज भी होता है, 100 से ज्यादा का वेटेज. ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स जैसे कि कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखा है कंपनी ने बट अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो ऑफ बैलेंस शीट एसेट हो जाएगा. उसके भी रिस्क वेट असाइन होता है. ये कुछ एग्जांपल्स है जो आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन में रिस्क वेट असाइन कर रखे हैं. जैसे कि कैश और बैंक बैलेंस विद आरबीआई, इसका रिस्क वेट 0 रहता है क्योंकि ये सेफली इन्वेस्टेड है आरबीआई के पास. या फिर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट रहता है उनका रिस्क वेट 0 रहेगा. जो कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके लिए रिस्क वेट असाइन किया हुआ है 20%. अदर इन्वेस्टमेंट्स का 100% रहता है. या फिर कोई अदर असेट है जैसे प्रीमाइस फर्नीचर एंड फिटिंग्स है बैंक के पास, उनका रिस्क वेट भी 100% रहता है. ऑफ बैलेंस शीट असेट्स आइटम्स में मेजरली 100% है, बट एक केस है जिसमें 50% दे रखा है, दैट आर शेयर डिबेंचर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस. अब टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के कंपोनेंट्स देखते हैं. टीयर 1 कैपिटल इज बेसिकली इक्विटी, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. अगर एनबीएफसी ने कोई प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो रिजर्व्स बट एक्सक्लूडिंग द रिवैल्यूएशन रिजर्व. फिर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अगर कोई एनबीएफसी ने इशू कर रखा है तो वो भी ऐड होगा, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर. फिर इसमें से लेस होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एनबीएफसी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड लोन डिपॉजिट जो एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओन फंड्स है और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू लेस हो जाती है. टीयर 2 कैपिटल में अदर कन्वर्टेबल डेट, अदर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, हाइब्रिड डेट, सबऑर्डिनेट डेट. सबऑर्डिनेट डेट इज बेसिकली डेट विच इज वेरी बेसिकली जो लास्ट में रीपेमेंट होता है जिसका पहले सारे क्रेडिटर्स पे हो जाएंगे उसके बाद पेमेंट होगा. Perpetual debt, we have added 15% in tier 1 capital. The rest, excess of 15% will be added in tier 2 capital. And we have excluded revaluation reserve from tier 1 capital. So revaluation reserve will be added in tier 2 capital, but it will be discounted at the rate of 55%. Now let's see an example to how to calculate CRAR ratio. In this example, suppose the NBFC has tier 1 capital of 3,000 and tier 2 capital of 1,000. So the total capital fund will be 4,000. Now comes the asset. Cash is 25,000. As we know, the risk weight is 0. So it will be coming as 0. Other investment 12,000. Risk weight will be 100. So it will be 12,000. Now comes balance in current account with other banks. The risk weight is 20% for it. So it will be 300.
total 12,300. So the CRAR will be 4,000 about 12,300, that is 32.52%. Now some other points we need to keep in mind while calculating CRAR ratio is market related off balance sheet items. Suppose an NBFC has been entered into derivative contract or so we have to take that also in account while calculating. So what will be the risk? What is the value of such item? Will be the expected cash flow? Will what the NBFC will have to pay if there will be an unfavorable derivative contract? That will be the amount for it. So now come the treatment of DTA, DTL. DTL is basically not capital or tier 2 capital calculation. Tier 1 capital. Tier 1, Tier 2 का basic difference जो है वो Tier 1 capital is Tier 1 capital एक तरह से होता है कि जो बेसिक कंपनी की इक्विटी है, ओन फंड्स जो होते हैं वो Tier 1 capital होता है. Tier 2 capital होता है कि जो कि Tier 1, Tier 2 में दो मेजर बाइफर्केशंस होते हैं. Tier 1 हो गया ऐसी कैपिटल जो कि बेसिकली ओन फंड से रिलेटेड कैपिटल है जिसमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट पॉसिबल है और वो फंड कहीं ना कहीं हमेशा कंपनी में रहेगा. दैट इज Tier 1 कैपिटल. तो जब भी एनबीएफसी के रेगुलेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें हमेशा दो कैपिटल्स की बात करी जाती है, Tier 1 और Tier 2. सिमिलरली जो आरबीआई की जितने भी गाइडलाइंस वगैरह हैं, जितने डिस्क्लोजर्स हैं, वो सब Tier 1, Tier 2 कैपिटल में चलते हैं. तो Tier 1 के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना है. Tier 2 के लिए तो मेजर जो Tier 1 कैपिटल होती है वो उस पर स्ट्रेस हमेशा ज्यादा रहता है रेगुलेटर का कि Tier 1 कैपिटल. Now comes the scale based regulation for NBFC. ये regulations अभी अक्टूबर 22 में आई थी. इसमें आरबीआई ने पूरी एनबीएफसी को 4 लेयर में डिवाइड किया है. दैट इज बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर. बेस लेयर में जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी उनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम है वो आती हैं. और कुछ एनबीएफसी जो हमेशा ही बेस लेयर में रहेंगी, दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी. ये ऐसी कंपनी होती है जो एज अ प्रमोटर रजिस्टर्ड होती है और इनको परमिटेड होता है कि एक नया बैंक फॉर्म कर सकती है. And NBFC not involved in public funds. Now comes the middle layer. All deposit taking NBFC, irrespective of their asset size, comes in the middle layer. And non-deposit taking asset size, and non-deposit taking NBFC having asset size of more than or equal to 1000 crores, वो middle layer में fall करती हैं. Core investment companies, housing finance companies, and infrastructure finance companies भी middle layer में. ये upper layer में shift हो सकती है अगर वो criteria meet करती हैं तो. But जो standalone primary dealers हैं, basically approved गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शंस में डील करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, एनबीएफसी विल ऑलवेज रिमेन इन द मिडिल लेयर. एनबीएफसी अपर लेयर इज बेसिकली टॉप 10 एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर असेट साइज. if RBI regulatory requirement or parameters meet करते हैं that the NBFC should be classified in upper layer, it will be classified in upper layer. NBFC top layer is basically empty right now. बट इफ आरबीआई थिंक्स कि किसी एनबीएफसी हाई रिस्क क्राइटेरिया में है तो उसे टॉप लेयर में नोटिफाई कर सकती है. अब डिस्क्लोजर्स अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन, अगर जो भी एनबीएफसी जिस स्केल में फॉल कर रही है उसको उस हिसाब से डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं. दीज आर सम कॉमन डिस्क्लोजर्स, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में देना पड़ता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स और द शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. इफ द एनबीएफसी हैज मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देन दे हैव टू describe the impact of various financial items and their management view on the modified opinion. Items of income and expense which are of exceptional nature need to be disclosed. And NBFC used to take loans from bank. So if there is any breach in the loan term agreement, suppose they have said that you have to maintain minimum 20% of CRAR ratio, and the NBFC is unable to maintain such ratio, then it need to disclose it under the requirements. And if there is divergence in any asset classification provisioning norms decided by RBI, then it needs to be disclosed. इस last disclosure का मैं आपको एक example दिखाऊंगी disclosure का last slide में. Now come the concentration limits for the NBFC. NBFC cannot give loan more than 25% of its own fund to a single borrower, and if there are a group of borrowers, it cannot lend more than 40% of their own fund to a single borrower. If an NBFC is an infrastructure finance company, that the relaxation is given for 5%, that means the single borrower limit will be 30% and the group borrower limit will be 45%. Concentration norms, basically NBFC cannot invest in shares and securities of other NBFCs or other companies, but it can invest in insurance companies if RBI approval is there.
or it has investing in its subsidiary or group companies, then it can invest. And these criteria does not apply to systematically important non-banking company not assessing public funds in India. Basically, public funds is the external funds जो भी company raise कर सकती है, but that does not include convertible equity shares, which is convertible within 5 years. End use restrictions, basically NBFC जब लोन लेती है बैंक से, तो there are end use restrictions. RBI ने ये 3 cases define कर रखे हैं जिसके लिए NBFC cannot use their loan amount. That is bill discounted, rediscounted, investment in unsecured loans, and financing for IPO subscription. Suppose NBFC cannot lend someone to so that the person can invest in an IPO or apply for an IPO. Next come auditors planning for audit. The auditor should develop an overall audit objective so that it can express true and fair view of the financial statements, and the preliminary study help the auditor in understanding the business issue, the key special mention areas that need to be focused while doing the audit to enhance the audit scope. Now comes the financial reporting framework. So listed NBFCs or NBFC having net worth of 250 crores or more need to follow Ind AS. And if the NBFC is following Ind AS, it should follow the Division 3, Schedule 3 of Companies Act. If the net worth of the NBFC is less than 250 crores, then the company will follow accounting standards only. All the NBFCs have to required to follow the RBI guidelines and disclosures required as per RBI. These are some regulatory guidance on implementation of Ind AS by NBFCs. First is RBI has provided certain guidelines. RBI has master guidelines for all the NBFCs that need to be followed. Then governance framework. Governance framework basically tells that all the policies that should be documented and approved properly and maintained. Next come expected credit loss computation. Expected credit loss computation in general way is a provision for doubtful debts that need to be created on non-performing assets. So the policy for ECL creation should be documented and approved. And if there is any changes, the impact of such change should be documented and justification should be there why there is a change in the policy. Now comes the classification of default accounts. Ind AS 109 basically does not define what is a default. So every NBFC should have a policy of their own and that should be approved that defines the word default. And in Ind AS 109, as we study, that there is if the loan is not being paid for more than 30 days, then there has been a significantly increase in the risk. But NBFC can increase the limit of 30 days to 60 days. Now comes the disclosure I was talking about, that if there is any divergence between asset provisioning of Ind AS 109 and provisioning as per RBI, then it need to be disclosed as per this format of Appendix E. Basically, IRAC हाँ वही बता RBI बेसिकली बोलता है कि जैसे कि अगर कोई NPA है, अगर वो 90 डेज से ऊपर है सपोज, तो उसको 50% ऑफ द ओवरड्यू अमाउंट पे अपने प्रोविजनिंग करनी है, और 180 प्लस है तो 100% अमाउंट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट पे प्रोविजनिंग करनी है. बट एज पर Ind AS 109 और कंपनीज की पॉलिसी, दे कैन मेक अ डिफरेंट पॉलिसी. फॉर इन दिस एग्जांपल, अगर 90 to 180 डेज में फॉल कर रहा है तो 50% ऑफ द टोटल ओवरड्यू अमाउंट, टोटल ड्यू अमाउंट पे फॉल करेंगे. तो RBI बोलती है ओवरड्यू अमाउंट पे वो करना. सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के लिए जनरल केस में ग्रॉस आउटस्टैंडिंग पे प्रोविजनिंग होता है. ओवरड्यू पे जो बोला तूने वो दैट इज ओनली फॉर माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस और जो नॉर्मल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस इज पार्ट ऑफ, जैसे इसने बोला कि कोर इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे माइक्रो फाइनेंस भी एक पार्ट ऑफ एनबीएफसी है जो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए रजिस्टर होती है. उस केस में ओवरड्यू अमाउंट पे प्रोविजनिंग होती है. इन जनरल जो भी प्रोविजनिंग होती है दैट इज ऑन ग्रॉस आउटस्टैंडिंग. ओवरड्यू हुआ नहीं है उस पे नहीं होती. तो मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का लोन दिया हुआ है, जो रिपेमेंट हुआ उसमें 90 डेज बाद डिफॉल्ट हो गए, उसके बाद 80 लाख का अगर आउटस्टैंडिंग है तो जो भी प्रोविजनिंग होगी वो 80 लाख की होगी. अगर इस 80 लाख में से 10 लाख की ओवरड्यू है तो सिर्फ जो माइक्रो फाइनेंस होगा उसमें 10 लाख की प्रोविजनिंग होगी, अदर माइक्रो फाइनेंस में 80 लाख की प्रोविजनिंग. ये जो समझाना चाह रही है कि Ind AS में क्योंकि प्रोविजनिंग नॉर्म्स नहीं है, Ind AS की आइसोलेशन में बात करें तो उसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स का भी रेफरेंस नहीं है. उसमें ECL लगता है. ECL मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. तो जो भी कंपनी है उसको ये असेस करते चलना है ऑन अ रेकरिंग बेसिस कि मेरे जो असेट वैल्यू है उसमें से कितना एक ऐसा असेट है जो कि खराब है. खराब मतलब दैट कैन हैव अ चांस ऑफ गेटिंग बैड इन फ्यूचर.
तो उसका एक पर्टिकुलर असेसमेंट करके, दैट इज द डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मैं प्रोविजन करता चलूंगा। और उसके हिसाब से चाहे वो स्टैंडर्ड लोन है तो भी, सब स्टैंडर्ड है तो भी, डाउटफुल है तो भी, और लॉस है तो भी, उन सबको सिंगल बंच में लेके आई कैन क्लासिफाई देम एज अलग अलग मेरे खुद के लिए की कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। बट वहां पे वो नाम ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होते कि मेरे लोन ये सब स्टैंडर्ड लोन है या वो है, फॉर द पर्पज ऑफ ICA, फॉर द पर्पज ऑफ ECA। तो वहाँ कैटेगरी बना सकते हैं कि इतना पुराना लोन होगा तो, इतना पुराना लोन होगा तो उसके हिसाब से ECL की वर्किंग करेंगे। वो वर्किंग का जो प्रोविजन बनता है वो, उसको मैं आयरिक नॉर्म्स के प्रोविजन से कंपेयर करूंगा। तो किसी भी केस में आयरिक नॉर्म का प्रोविजन मेरे ECL से ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा है तो आई हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑफ आयरिक। तो मिनिमम आयरिक नॉर्म्स को तो मेंटेन करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा ECL कितना भी आ रहा हो। अगर मेरा ECL का प्रोविजन 10 करोड़ आ रहा है, आयरिक नॉर्म का 12 करोड़ आ रहा है, तो मेरे को 12 करोड़ की ECL बनानी पड़ेगी। तो भी मतलब ECL बोल लो चाहे आयरिक नॉर्म्स का बोल लो, कुछ भी कर लो। रिवर्स सिचुएशन है तो आई कैन गो अहेड विद 12 ऑल्सो, उसमें मेरे को आयरिक नॉर्म पे रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं। अब इसको समझा दीजिए। जब इस एग्जांपल में जैसे कि एज पर इंडेक्स जो आ रहा है लॉस अलाउंस प्रोविजन दैट इज 1925, और जो आयरेक्ट नॉर्म्स बोलता है वो 1400 अमाउंट आ रहा है। तो जैसे कि सर ने बताया जो एक्सेस है एज पर इंडेक्स है वो ज्यादा है आयरेक्ट नॉर्म से, तो इसमें कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वी कैन गो अहेड विद 1925 फिगर। बट सपोज अगर इस 1400 की जगह जो RBI के हिसाब से 2000 का बनना होता, तो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 75, उसका इम्पेयरमेंट रिजर्व बनाते, क्योंकि आयरेक्ट नॉर्म्स का मिनिमम अमाउंट बनाना कंपलसरी होता है एज अ प्रोविजन। नाउ अक्षता विल कंटिन्यू। Thank you, Mansi, for such an insight over NBFC introduction. Now we'll move forward towards the auditing framework in an NBFCs. So let's understand the basic procedure which is followed in the audit. Either it is an NBFC or a manufacturing entity or any other type of entity or any other type of company. This audit procedure remains the same for all the entities. First of all, there is a planning of audit. As per SA 300, we all know that planning of audit is the major part in an audit. The formation of audit program, audit strategy, in order to execute the audit effectively and efficiently is very important. So plans are prepared at the initial stage of an audit and it's continued throughout the audit procedure. The next step followed after planning the audit is obtaining an understanding of the client and its environment. As Lalit sir also said and Gaurav sir also said, that obtaining an understanding of the client is very essential, especially in the case of an NBFC. Today's environment in the NBFCs, they are data-driven and system-driven NBFCs. Most of them are technological-driven. That's why they are also called as fintech. So the major understanding of the client's environment is very essential, like the nature of operation, the size of their governance, the whether they are financing the small investors or big investors. All these needs to be considered. The next step coming forward is the assessing the risk of material misstatements, applying SA 330 and responding them to the assessed risk of material misstatements. Material misstatements risk can be identified and assessed through audit procedures like inspection, inquiry, observation, recalculation, reperformance. All these guidance is provided in the Standard on Auditing 330. Now, next step come forward is performing further audit procedures. Once the risks have been identified and their responses have been identified, the next step for the auditor is to perform the further audit procedures. It involves the true test of controls and substantive audit procedures. Substantive audit procedures also contains test of details and further audit procedures. These all need to be performed in the audit of any of the entities and specifically for NBFCs. Next, the audit is completed by performing audit sampling, analytical procedures. All these steps are formulated and the audit is completed. Once the audit is completed, the auditor will form an opinion and issue the audit report as per SA 700. Either it will be a modified opinion or an unmodified opinion depending on the circumstances. Now we will understand the basic terminologies that are used in this auditing framework in order to understand the audit better. The first is objective and scope of an audit. Anything we do, we need an objective. कोई भी चीज अपन करते हैं तो हर चीज का एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है.
Especially for the audit, the objective and scope is to express an opinion on the financial statements, that either they are free from material misstatements and whether they have been prepared in accordance with the financial reporting framework. So the basic objective and scope in the audit is the express an opinion and identification whether the financial statements are prepared as per applicable SRS. The next step is agreeing the terms of engagement. There is also a standard on auditing, SA 210, which says about this agreeing the terms of engagement. Specifically, in the case of an NBFC, we have to identify that either as it is also said that NBFCs are now the fintech companies and they involve the system and they have system-driven technologies. So a person or expert in the IT systems is also required in the conduct of an audit. So either we should agree to we should at the time of terms of engagement deciding, we should identify that whether there is a sufficient expertise in the aspects of finance related audit or the expertise in the context of IT systems and communications. So this needs to be ensured at the time of engagement itself so that it may not be dependent in the future. The next step is audit planning. As I have already explained, that a plan is already required for the conduct of an audit in an efficient and effective manner. So audit planning is specifically required in the case of an NBFCs. The points which are covered in the audit plan is taking the sufficient knowledge of NBFC's business and governance structure, because without it, we will not be able to conduct and get the understanding of the NBFCs in a better way. The next step is the considering the assessments and inherent control risks. The main step involved here is internal financial controls in the case of an NBFCs. So considering the assessment of inherent and control risk is also important at the time of audit planning. The next step is nature, time and extent of audit procedures. These are need to be determined in the case of an audit planning so that a proper audit program is determined. And the most important is the appropriateness of going concern. And depending on the SA 570, we have to identify this also. The next step is audit evidence. In order to conduct efficiently audit and to provide an opinion, we have to gather sufficient and appropriate audit evidence regarding the conduct of an audit. So these need to be obtained regarding the accuracy and completeness, whether the accounts of the NBFCs are accurate and complete, whether there is an existence and effectiveness of control systems, whether they are proper and whether they are existent, so that the inherent control and detection risk can be reduced to the minimum level. And the appropriateness of asset classification staging, because here, other than Companies Act, there is also the requirement of RBI. So it needs to be, so as per RBI regulations and RBI guidelines, master circulars, a proper classification and provision requirement is there in case of an NBFC. So that needs to be ensured and proper audit evidence needs to be obtained regarding the same. And adequacy of the financial statements disclosure and presentation needs to be ensured. The next step is risk assessment and internal controls. Since audit of an NBFC is mostly data-driven and system-driven, in practical life also, all the data we extract in case of an NBFC is either from the system. There is no such manual data or Excel sheets because it contains a huge variety of data. So the proper assessment of the system is very essential in order to conduct the audit in an efficient manner. So the extent of assessment of controls would depend on the audit objectives, since we have already discussed that the audit objective of an auditor is to properly identify which controls are available and which are not and which are lacking, so that the proper conduct of an audit can be taken. Also, the most important part is the effective controls over the period of time. For example, if we have for example, बहुत अच्छे हैं। बात हो गई ना आपसे? बात हो गई? हुई ना? नहीं मेरे से हो गई। हाँ। So the next step is auditor should assess the effectiveness of control over the period of time. So we have to decide that whether at the starting of an audit, either the internal controls are proper,
or in the middle of the audit when we are conducting the audit, either the controls are proper, and after that we have to decide, means at different point of time we have to assess that either the controls are performing regularly or not, or there is any lag in the controls. So auditors should develop the audit plan on the basis of evaluation of controls, whether if the auditor finds that the controls are lacking, so it needs to draft the plan accordingly and give the report according to that presentation only. Now, in the case of internal controls, the attention should also be given to Section 143 of the Companies Act, Section I, which is also, as NBFC is also already a company and it has to follow the Companies Act guidelines. So this attention should also be taken in 143. Internal financial controls requirement should also be considered. The next step is consideration of laws and regulations in the audit. As we all know that NBFC are governed by multiple laws. Firstly, Companies Act. Secondly, the RBI regulations, or any other NBFC, whether it is working in insurance or any other sector, it has to take the regulatory registration under the regulatory framework also. So it has to consider various laws and regulations in the conduct of an audit. So NBFC is covered by various regulations of RBI, needs to be reporting requirement. For example, there are various reporting requirements under the Companies Act. There are also numerous regulations under the RBI reporting framework. Let's take an example. In the case of fraud, there is Section 143(12) in case of Companies Act. And we have to report to the audit committee of the central government with the limit of 1 crore rupees. So that is the requirement of Companies Act specifically. In the case of RBI regulation, there is also a such limit prescribed that if there is not such exact amount, but there is a limit other than 1 crore rupees, that if the amount exceeds 25 lakh rupees or 30 lakh rupees, the NBFCs or the banks have to report to the RBI directly, other than informing the audit committee. So there is an additional requirement in addition to Companies Act. So all these regulations need to be kept in mind while performing the audit of NBFCs. The next step is, apart from the usual compliance, there is also the requirement compliances of SEBI regulations. Since NBFCs are listed, if the NBFCs are listed, so they need to follow the SEBI regulations also. Next is the amendments in the rules and regulations which are updated from time to time, as RBI issues master circulars on regular basis and keeps updating it regularly. It changes its various regulations are for a particular time period. So it needs to be ensured that whether the NBFCs follow the proper circulars and follow the master circulars properly. And we have to ensure this throughout the audit period, not at the starting or the end. We have to comply with throughout the period. The major role concerned over here is, we have decided that since there is a technological driven industry, so it is not essential for the audit partner or the audit engagement team that all are efficient in the technology. So there is a need for either there may be a need or there may be a not. If we use the work of an expert, then we have to properly analyze it and use the standard on auditing requirement guidelines also. Using the work of an expert in the case of some examples like valuation, for example, land and buildings, there may be a registered valuer. We have to take the registered valuer report for calculation. Valuation of financial instrument through profit and loss account, we may involve some other third party to value it. Methodologies for impairment loss, there may be third party system software through which we calculate the impairment loss. So it might be useful. And legal opinions, there might be some legal jurisdiction problems or some legal opinions which may differ. So some other advocates or legal consulting firms may be considered. So the use of an expert should also be considered. The factors which we need to determine in case of an expert are materiality in the items, that whether if the item which we have dependent on the expert are either material in the financial statements or they are not material. So we have to determine the materiality of these items. Next is the nature and complexity of the item. For example, if it is a smaller amount and its nature is not complex, so we might ignore it or we may keep it on the second hand so that we may focus on more important considerations. And other audit evidence. For example, we have checked the legal consulting charges account in the trial balance of an NBFC. We have said that there is a third party consultant and we have given such and such amount of fees.
So we are considering the work of an expert, but additionally, we have to also determine that we are not lagging with the responsibility that once we are dependent on the work of an expert, we will not audit this balance as it is already discussed with the work of an expert. So the audit evidence also needs to be obtained regarding the same. The next important point is representation by management. There are certain areas in the audit conduct where we are not able to identify the sufficient and appropriate audit evidence that we are thinking of. So representation of the management needs to be obtained, and representation of management is not the sufficient and appropriate audit evidence, but it is essential for the conduct of an audit and to issue the proper report and to give a proper opinion on the audit. Audit करने का replacement नहीं है. Yes. Mobile cannot replace any audit document. Just an additional document to what you are doing. कि मैंने कुछ काम किया, मेरे को लगा यार मैंने तो कर लिया, but I should have assurance from management also कि this thing is happening this way on. पर मैंने सिर्फ मैनेजमेंट से लिखवा के लिख लिया कि ये काम ऐसे होता है, मैंने उसको चेक नहीं किया, तो that is not the solution for not doing work. Basically support other audit evidence को support करता है. एविडेंस तो प्राइमरी जो ऑडिट एविडेंस है वो तो ऑडिटर का ही होगा. तो आपको ऑडिट के लिए प्राइमरी एविडेंस तो अपनी ऑडिट का पार्ट चाहिए. ये सिर्फ उसको सपोर्ट करेगा कि यस वी हैव हैड assurance in a written from management also that what we have checked and what we have assumed is correct, as they are also saying the same. The next is the responsibility of joint auditors. As Lalit sir initially mentioned that there is a guideline that after 3 years the audit engagement partner needs to be changed and some other audit engagement तो वो partner. चेंज हो गया. पहले था कि 5 साल की ऑडिट मिलती थी इस एक्ट के अंडर में, और 3 साल में ऑडिटर का पार्टनर चेंज करा. मतलब एंगेजमेंट पार्टनर नीड टू बी रोटेट विद इन द फर्म इटसेल्फ. अभी 2 साल पहले वो लॉ ही चेंज हो गया. अब एनबीएफसी का अपॉइंटमेंट ही 3 साल का होता है. तो वो रोटेशन वाला क्लॉज ऑटोमेटिकली ड्रिवन हो गया, क्योंकि अब तो ऑडिट फर्म ही हो जाती है रोटेट, एंड दैट टू विद अ कूलिंग ऑफ अ 2 टर्म. दैट मींस 6 years. So there is an additional guideline by RBI that NBFCs with the asset size of 15,000 crores and above at the end of previous financial year needs to have 2 audit firms as joint auditor, and they do not have a common partner or they should not be of the same network firm. So this asset size of 15,000 crores and above, since the asset size is a huge amount, the responsibility needs to be divided among the audit firms, and so this requirement has been issued by RBI. NBFCs may have a board approved policy on the number of auditors. Apart from the guidelines of RBI, the NBFCs itself may have the board approved policy regarding the complexity of the transaction, level of technology, identified risks in financial reporting. These factors may be considered, and the board may involve either 2 or 3 joint audit apart from the guidelines of RBI. Also, the requirements of standard on auditing 299 needs to be considered in the joint conduct of an audit. After the completion of an audit, there is an audit documentation program. Audit documentation is similarly important, is of similar importance as issuing the opinion of an audit, as audit summary may facilitate the effective and efficient peer reviews. कभी भी कोई डिपार्टमेंट का नोटिस आता है या कभी भी बाद में क्वेरी होती है, ऑल थिंग वी रिमेंबर इज दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जब अपन ऑडिट कंप्लीट करते हैं. एक बहुत बड़ा, मतलब अपन किसी के भी अभी ऑफिस के अंदर भी यही चलता है, मतलब हर ऑडिट के बाद अपन को फाइलिंग कंप्लीट करनी होती है. It is not just a paperwork, it is requirement for the future purpose for the conduct of future audits properly. The audit documentation, audit documentation is not limited to the auditor's work. It also contains documents like minutes of the meeting of the NBFCs and such other documents that we are discussing with TCWG, those charged with governance, the major discussions which are held with the TCWG, senior management. These significant matter discussions are also placed in the audit documentation. Also, the major inconsistencies we have found out in the audit are specifically included in the audit documentation. For example, there is an inconsistency found out in the advances amount. It may be either rectified during the conduct of an audit, but that major inconsistency needs to be included in the audit documentation and should be part of the audit documentation. As I have already said that NBFC is covered under the Companies Act since it's a company.
If there is CARO applicability also on the company NBFCs, RBI regulations are also there in case of an NBFC. So reporting requirements are there is a huge amount of regulatory requirements in case of reporting. Considering the RBI reporting requirements, RBI through Section 45MA of RBI Act 1943 lays down various powers and duties of the auditors. Section 45MA casts duty on the auditor to inquire whether the respective information statement has been submitted to the RBI. A list of statements needs to be submitted to the RBI on regular basis. So that needs to be ensured by the auditor that whether they have been submitted or not. Section 45MA2, where the auditor's report to intent to the RBI should be included, means the requirement of 45MA needs to be included in Section 143 subsection 3 requirement of the Companies Act, means they are correlated. The RBI regulations which we are updating, the auditor needs to update the same in the Companies Act requirement. Independent audit report में पैराग्राफ होता है अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला अपन मैक्सिमम ऑडिट्स में कुछ नहीं लिखते, उसमें एनबीएफसी इंश्योरेंस एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसमें अलग से एक सेपरेट रिपोर्ट अटैच होती है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करने का एश्योरेंस होता है. उसमें बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसके भी क्लॉजेज होते हैं और ये वाले क्लॉजेज जो होते हैं जिसको ऑडिटर सर्टिफाई कर रहा होता है कि दिस हैज हैपेंड and that becomes part of an independent auditor report as an. Yes, and 45MA 1A empowers the RBI to issue directions. RBI can issue directions or guidelines at any time to the NBFC companies, and this power has been given by the Section 45MA 1A. RBI has also issued the Master Direction Non-Banking Financial Company Audit Report. According to these directions, the auditor, in addition to Section 143 requirement, should also make a separate report to the Board of Directors on specific matters. The RBI may issue that specific direction to issue the report to the Board of Directors. In case there is some modification in this report to be issued to the Board of Directors, the same needs to be reported to the RBI directly. There is no such limit. If there is any of the modification to the report to the Board of Directors, it needs to be reported directly to the RBI. Auditor needs to report on whether the NBFC has obtained a proper certificate of registration. This condition needs to be checked at each and every audit period. It means we cannot assume that it has been fulfilled in the previous year, so we cannot check in this year. This condition needs to be checked and reported in each of the audit period that whether a certificate of registration has been obtained, whether the 50-50 test has been correctly, whether the net owned fund there is properly throughout the audit period. In addition, for systematically important companies, there is also a requirement of NBF7. For NBF7 is also required to be issued to the RBI regarding the compliance with minimum CRAR and CAR ratios. So this form needs to be submitted directly to the RBI in adherence to the timings of guidelines. Additionally, there is an exception reporting. In case there is any modification, either non-compliance of some RBI guidelines or master regulations or Companies Act, there is an exceptional reporting which are reporting in case of non-compliance in any of the identified matters. This exception reporting is made to the RBI directly in case of an NBFC. Auditors are also required to file XBRL return for NBFC that they are auditing. There is a specific 42 question report that needs to be fulfilled, that needs to be completed, and that needs to be submitted to the RBI. The major areas of auditor in relation to fraud in the audit of financial statements are listed here. Basically, we all know that the major responsibility of preparation of the financial statements is of the management of the auditor. But auditor cannot raise his hands that the financial statements are prepared by the management, so internal frauds cannot be detected. There is some certain amount of responsibility that needs to be considered by the auditor. SA 240 needs to be considered in case of auditor's responsibility with respect to fraud. As initially Lalit sir also said that apart from misappropriation of assets, there may be some financial reporting frauds. Like, for example, I like to give an example over here. For example, a loan has been given to a related party. NBFC has given a loan to some related party, and the loan means the company to which the loan has been given is brought under CIRB process by the NCLT. So, as per the requirements of, if we consider that the NBFC is an Ind AS compliance NBFC,
So it needs to follow the requirements of Ind AS 109. It has to perform the expected credit loss requirement and then make the provision accordingly. If we identify that there is some means, if we identify that the CIRP process is undergoing and the NCLT has started its procedure, but also we have to identify that whether the company is in the position to repay its debts or not. Means this condition needs to be checked apart from the condition that there is a CIRP process initiation. For example, we have given a loan of 100 crores and the assets of such other company are very much sufficient to cover that loan. So expected credit loss amount will be lower and the provision requirement that needs to be considered should be lower. So there may be a fraudulent financial reporting that the company is going in the NCLT procedure, so higher amount of provision can be made. But according to the provisions of Ind AS, the specific requirement should be taken that either the company is able to pay or repay its debts or not. On a lighter note, सबसे सुंदर बैलेंस शीट कोई होती है ना, तो एनबीएफसी रियल एस्टेट कंपनियों की होती है। ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस जो दिखता है, मतलब कोई भी आग बंद करके अगर अच्छी बैलेंस शीट दिख रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं या तो एनबीएफसी की होगी या रियल एस्टेट कंपनी की होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की भी होगी। बट अगर रेशियोज में बात करें तो सबसे अच्छे रेशियोज बने हुए, सबसे अच्छी मतलब विजिबिलिटी में सबसे अच्छे ग्राफ्स बने हुए, वो सब जो दिखेगा वो हमेशा इट कैन बी अ रियल एस्टेट कंपनी और एनबीएफसी का। तो वहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि द थिंग्स व्हिच आर विजिबल एज द बेस्ट शुड बी चेक्ड इन दैट मैनर ओनली, कि ये बेस्ट है तो लेट अस चेक आल्सो इन द बेस्ट मैनर, कि ऐसा कोई चीज ना हो कि मेरे एफर्ट्स में कोई कमी रह जाए या मेरे चेकिंग में कोई फर्क रह जाए जिसके कारण ये कोई चीज इसमें हिडन हो जो हम आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो जितनी अच्छी बैलेंस शीट होती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर हमारी बढ़ जाती है टू इंश्योर द beautification of that balance. So that is really happening in NBFC and real estate. The discussion regarding internal and external factors should also be considered, like whether there are certain circumstances which are creating an incentive or pressure in the management or others. They are providing the opportunity of frauds, or where there is a culture or environment of creating the frauds in an NBFC. So the RBI has issued a circular requiring all the NBFCs to report on the occurrence of fraud, irrespective of some certain limit. RBI has reported directly that if a fraud has been identified in case of an NBFC, it needs directly to be reported. Now there is a reporting of frauds to NBFC. For the purpose of reporting, RBI has classified the frauds in the following categories. This is the classification in which the frauds are to be reported to the RBI. Frauds involving 1 lakh and above. RBI की रिपोर्टिंग के लिए है, ये अपने लिए नहीं, एज एन ऑडिटर नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू आरबीआई बाय द कंपनी। का मतलब ये नहीं कि 1 लाख से नीचे का फ्रॉड नहीं। Frauds committed by unscrupulous borrowers, fraud involving 1 crore and above. These are the brackets in which the loans are to be identified or the fraud amounts are to be distributed. An NBFC is also required to report these cases where the central investing agencies, for example, if some central investing agency like ED or some any other agency, central government agency are involved in any of the proceeding related to an NBFC, that needs directly to be reported to the Reserve Bank of India. Also, reporting on fraud needs to be considered in case of subsidiary and affiliate firms. For example, in case of A NBFC, the subsidiary is B NBFC. So if any fraud is committed in case of B NBFC or any other C NBFC that is a joint venture of A, so the fraud in case of B and C also needs to be reported by the A NBFC to the RBI. There are some forms and in which the fraud reporting is conducted to the RBI. In FMR 1, the purpose of this form is report on actual and suspected frauds. All frauds are covered. Either it may be actual or it may be suspected frauds. The reporting is from the 3 weeks from the date of detection. And it needs to be reported in the Department of Non-Banking Supervision of RBI, which is in the jurisdiction of such NBFC. If the amount is above 1 crore rupees, then it needs to be submitted to the central office of RBI, not at the means. In addition to the jurisdiction office of RBI, it also needs to be reported to the central office of RBI. FMR 2 is the quarterly reporting on frauds outstanding. Means if a fraud is conducted and it is outstanding over a period of time, then quarterly reporting in FMR 2 is required. Reporting due date is within 15 days from the end of the quarter.
and it needs to be submitted to the regional office of NBFC jurisdiction. FMR3 is the quarterly progress report on frauds of 1 lakh and above, and within 15 days, the timeline is also 15 days from the end of the quarter, and it needs to be reported in the jurisdiction office of NBFCs. Now we'll next look after the cases of attempted frauds. From December 2012, the practice of reporting to the attempted frauds has been discontinued. There is no such reporting of attempted frauds. However, if the individual cases involving 25 lakh or more needs to be placed before the audit committee in case of an NBFCs. As per the requirement of RBI circulars, NBFC should need to ensure that all the frauds of 1 lakh and above are reported to the boards promptly on their detection. Also, there is a guideline that cases of fraud involving 1 lakh and above committed by outsider on the NBFC also need to be reported to the state police, and these cases of fraud committed by NBFC employees, if the NBFC funds exceeds 10,000, they also need to be reported to the state police. And the fraud reporting requirement under the Companies Act of 143/12 also needs to be considered. This is the auditing framework we have considered. Now comes the major areas of audit concern, the key highlights of in the conduct of an audit. Majorly, it is the balances of banks. Balances with banks needs to be considered with the auditor should take the third-party confirmation in case of a bank. We have to check the bank statements and from the bank itself, and we have to verify it from the ledger amounts. The auditor is also required to review the reconciliation pertaining to the escrow or control accounts. In case of an escrow or control accounts, we have to also ensure that whether the proper balance has been given in the books and as per the escrow or control account. Loan balances and interest income. This is major importance. This is of major importance that if we have taken any of the loan or we from the bank, then the loan amount outstanding in the books of bank and the loan amount coming in our books needs to be properly matched with and reconciled with. The auditor should also consider whether the balances with other NBFCs, as at the date of financial statements, are represent a bona fide commercial transaction. For example, if we have given A NBFC has given a loan to B NBFC, then we have to ensure that whether the balance in the books of accounts of A NBFC relating to B NBFC is same that B NBFC has reported in its financial statements. Both the parties needs to be cross-tallied, and window dressing should not be there in case of an NBFC. The next part is the money market instruments. The auditor should ensure that money market operation, basically money market instruments consists of treasury bills, commercial bills, commercial paper, and money and any other bonds or debentures. These all are money market instruments. Money market operations of the NBFC should be in accordance with the board policy. And there should also be a physical inspection in case of physical inspection should also be conducted in case of these money market operations. Ownership of these instruments needs to be ensured, and appropriateness of valuation. We have earlier considered that using the work of an expert. We use the work of an expert in valuation of these money market instruments or some financial instruments. So it needs to be properly identified that the valuation is also proper. The major part coming towards the NBFC audit concern area is financial instruments. We mostly cover about the financial assets in the books of an NBFC, means the loans which the NBFC is giving to the other parties. The first step is recognition and initial measurement. As per Ind AS 109, the recognition and initial measurement takes place at fair value. Next step involved is classification and subsequent measurement and assessment of the business model. So subsequent measurement takes place through the assessment of business model. On the basis of business model, it is classified into three categories: amortized cost, FVTPL, and FVOCI. In amortized cost, there is an intention to hold and not to sell till the maturity date. In case of fair value through OCI, the intention is to hold and sell at certain point or after a certain point of time. And the fair value through P&L, there is an intention of trading and not holding the asset. The next is reclassification. The assets once identified in amortized cost, fair value through P&L or fair value through OCI
can be reclassified other than irrevocable if irrevocable choice is taken in case of equity instruments. The next part is impairment of financial assets, as we have already discussed in detail and we will further discuss it about. So impairment of financial assets, this is a major part in which we consider the expected credit loss requirement. The next is derecognition or transfer of financial assets. One example I want to quote over here in case of derecognition. For example, there are some loans given to the loans given by the NBFC to some individuals. These loans are insured by some insurance companies. If the party to whom the loan has been given, suppose they are individual and they died, there is a death of such loan borrower, and the insurance company also rejects those claims, then we need to properly ensure that these loans should be de-recognized in the books of accounts, as they do not have any fair value and they'll not be able to, and the NBFC will not be able to recover the amount from those loan amounts. The provision like right of return. Yes. So here there is a small differentiate between NBFCs following notified AS and NBFCs following Ind AS. This is particularly regarding the impairment of financial assets or provisioning regarding the provisioning of the assets in case of an NBFC. In case of NBFC following the notified AS, provisions under the income recognition asset classification IRACP provisioning is to be made as per RBI norms in case of AS compliant entities. So here the provision categories are standard, substandard, doubtful, and loss assets. Standard assets are basically classified into three categories. SMA 0 means special mention account 0, special mention account 1, and special mention account 2. If the loans or if the amount are not overdue, means the days past due DPD is below 90 days, then they are classified as standard. But there is a sub bifurcation in the standard category, SMA 0, which is up to 30 days, SMA 1, which is more than 30 and up to 60, and SMA 2, which is more than 60 and up below 90. Once it goes above 90, the DPD goes above 90, it is classified as NP and comes into the category of substandard. After fulfilling the category of substandard, it is further moved to the doubtful category and loss assets if the RBI declares it's a loss asset. In case of NBFC following Ind AS, the requirement is particularly different. There is no such standard substandard classification. The provisioning is as per stage requirements, stage 1, stage 2, stage 3. This needs to be considered at the time of formation of expected credit loss in case of Ind AS compliant entities. In case of stage 1, there is no such significant increase in credit risk and there is no such credit impairment. So ECL provision is for 12 months ECL is prepared. There is no such lifetime ECL prepared on such assets. In case of stage 2, there is significant increase in credit risk, but there is no credit impairment. So in case of stage 2, the interest is calculated on EIR and gross carrying amount, as we have discussed in the earlier slides also. In case of stage 3, the assets are credit impaired and lifetime ECL is also created and interest is calculated on the net carrying amount. There is Schedule 3 Division 3 requirement also in regarding the investments. So classification of investments under the following categories is classified under the Schedule 3 Division 3 requirement under equity instruments, debt securities, government securities, other approved security, investment in subsidiary, mutual funds and other. These all are the categories which needs to be classified in case of investments. Schedule 3 Division 3 further requires that the investments are further classified as measured at amortized cost, FVTPL, FVOCI or designated at fair value through P&L. These all are the requirements of Schedule 3 Division 3 requirement which is applicable to Ind AS compliant NBFCs. Now comes the restriction on investment as per RBI master direction. So there is a restriction on investments in case of investment and credit companies, ICC, which is accepting the public deposits. This restriction is regarding the land, building and unquoted shares. ICC cannot invest in land and building beyond 10% of its own fund, and the exception is allowed only for the own use buildings. Means if an ICC wants to buy a land or building other than for its own use, it cannot do so. ICC cannot invest in unquoted shares of another company beyond 20%. The company must be either the subsidiary or part of the same group companies. Only then it can invest. It cannot invest in unquoted share of some other company. Land and building.
if acquired in case of satisfaction of debts, needs to be disposed within 3 years or within the extended period as approved by RBI. This restriction is not applicable to the insurance company, and the exemption is granted if the RBI specifically permits. Let's consider the hypothetical scenario in which the ICC named ABC Investments that accepts the public deposits. ABC Investments has an own fund of 100 million. It can invest up to 10% in land and buildings. So 10 million can be invested in land and buildings for the own use. The investments in unquoted shares of other company cannot exceed 20 million. That is 20% of the own fund we have considered here. The own fund is 100 million. So if the ABC Investments acquires land building for satisfaction of debts, then it needs to be disposed within 3 years or the extended guideline as prescribed by RBI. If the ABC Investments is an insurance company, then no such restriction is to be followed, and the specific exemption can be granted by RBI also. This restriction we have already discussed that to lend, there is a limit of 25% and 40% to the group entities, and it can be further to 5% in case of IFC companies. We have already discussed earlier. The next part come here is capitals and reserves. As these are of most importance in case of an NBFC, banking regulators pay close attention to NBFC capital, since we have already discussed that the major areas of audit concern is tier 1 capital, since these are own funds. So the major attention of the regulatory bodies is on the tier 1 capital. So even a small change in the capital or reserve may have large effect on the NBFC's ability to continue the operations. So it needs to be properly identified and properly discussed. Auditors are required to report on wide range of disclosures about the NBFC capital and capital ratios like CRAR ratio, CAR ratio, all needs to be properly formulated and properly managed in case of an audit of NBFCs. In addition, where the applicable regulations provide the restrictions regarding the distribution of retained earnings, means if there is any of the restriction that the retained earnings cannot be distributed, it also needs to be complied with. An auditor needs to ensure that whether the compliance has been fulfilled or not. The major area of audit concern here is Ind AS 115 income recognition. There are various types of incomes which are booked in the books of an NBFC. First of all, there is interest income, where the financial asset becomes credit impaired. Then the interest income will be calculated only on the net provision amount. Means it will not be calculated on gross carrying amount. It will be calculated on net carrying amount of the financial assets. The next is fees income, that is loan processing fees, document fees. Basic से केस नहीं होता तो क्या होता? If there is no such Ind AS, then interest income will be calculated specific. बिना Ind AS की income कैसे account होगा? Ind AS की नहीं आती, बिना Ind AS की सबको आती है. अभी तूने अच्छे लोनों की बात करी, खराब लोनों की बात करी? अच्छों की बात करी. खराब में क्या करते? बेसिक इनकम कैसे अकाउंट मानी? तेरे को तो आना चाहिए बेटा. बेसिस पे खराब वालों की और अपनी बेसिस पे. बेसिक बेसिस पे खराब वालों की और अपनी बेसिस पे अच्छे वालों की. नॉर्मल एएस में करते हैं, है ना? तो उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? अब इंडियस में कैसे कर रहे हैं, पढ़ के बताओ. साइड में है पूरा, इसमें ही है सब कुछ. क्या उससे कैलकुलेट करेंगे सर, उसकी मतलब सेट की वैल्यू अपने जो क्रेडिट लॉस हुआ है वो कम हो जाएगी, इसकी वजह से अपनी ईआईआर चेंज हो जाएगी. तो नई ईआईआर आएगी वो कम होगी, तो इससे अपनी इनकम वैल्यू कम हो जाएगी. ईआईआर से अपनी इनकम बुक करेंगे. मतलब पहले अगर मान लो अपने 10% से एग्जांपल बना ले. हाँ 10% से चल रही थी पहले इनकम, 10% ऑफ ग्रॉस वैल्यू पे. हाँ ठीक है. तो मतलब अगर अपना क्रेडिट पेमेंट हो गया तो उसकी वजह से अपना उसका लोन बुक करेंगे. उसके बाद अपने जो रेट होगी वो भी चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से अपने ईआईआर से रेट थोड़ा चेंज होता है. रेट तो वही रहता है. नहीं, अपने इंटरेस्ट इनकम करके ईआईआर करेंगे. किस पे करेंगे? कोई नेट अमाउंट मतलब नेट ऑफ ईआईआर पे, नेट ऑफ ईसीएल पे. हाँ हाँ जी. और कोई
पढ़ ले, वो मुझे बताता हूँ। अंग्रेजी लिखी है भाई, और तो कुछ लिख के लाइए था, इंग्लिश ही है। आयुषिक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो निकाल चुके, पहले ही निकाल चुके इफेक्टिव इंटरेस्ट तो टेबल पे। वो तो अच्छा है चाहे खराब है, सब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे निकल रहे हैं इसमें। तो अच्छे और खराब में फर्क क्या हुआ वो समझना है अभी। तो भाई उसने कहा एएस में होता है तो अच्छे पे तो अपन फुल वैल्यू पे निकालते, मतलब अप्रूव बेसिस पे, और खराब हो जाता लोन बैठ जाता तो अपन उसको कैश बेसिस पे निकालते। वहाँ ईआर का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। एएस में तो 12% पे लोन दिया तो 12% या तो पूरे पे निकल रहा है या नहीं निकल रहा, काम खत्म, राइट बनी। एएस में तो अब इंडेस में 12% की एआर आ गई मान ले, तो वो तो ओवर द टर्म ऑफ लोन फिक्स हो गई है ना, सीधा ओवर द टर्म ऑफ फिक्स हो जाती है एआर, तो एआर फिक्स हो गई। अब और क्या चाहता है एएस फिर, एआर निकाल दिया हमने, कर दिया, काम खत्म हुआ। वहाँ क्रूड और कैश है, या एआर निकाल दिया। और भी कुछ कहना चाह रहा है क्या? बाद में लोन लेस रिस्की हो गया। लेस रिस्की तो पहले दिन लेस रिस्की होता है, बाद में तो बढ़ता है। ज्यादा जिस दिन बांटा उस दिन रिस्की है। ग्रॉस अमाउंट में से सेपरेट कर दिया, ग्रॉस अमाउंट में ईसीएल हटा दिया, बाकी अमाउंट पे तो अपन ने पूरा इनकम भी करना है इस पे। बाकी अमाउंट पूरा इनकम। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर अपन एएस और इंडेस के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ज्यादा किस में बुक होगा, एएस में होगा कि इंडेस में होगा? ये समझाओ दोस्तों। यहाँ तो प्रोसेसिंग फीस करके लेस भी तो कर रहे हैं, एआर भी तो कम कर रहे हैं पहले दिन। बाकी प्रोसेसिंग फीस को तो इनकम बुक कर देते हो पहले दिन, एएस में तो या तो उसको भी अमोर्टाइज करवा दिया, ऐसे करते हैं ना। एआर निकाल दी उन्होंने, तो एक इनकम तो वही कम कर दी पहले दिन ही। फिर इंडियस में ज्यादा क्यों हो रहा है, सब बोले एक साथ ही इंडियस में ज्यादा आएगी। यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक लोन खराब था, यार मैंने अज्यूम किया खराब था, 20% अज्यूम किया कि 20% खराब था, मतलब ईसीएल के मैंने प्रोविजन बनाए। तो मेरी बोर्ड की जो पॉलिसी थी उसमें ये था कि भैया अगर 90 से 180 दिन का लोन होगा, मैं मानूंगा कि वो 20% ईसीएल बननी है उसको, ठीक है। तो बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट होगा, बैक्ड बाय पास हिस्ट्री होगा, या जो भी अजम्पशन होंगे उसके होगा, उस पर अपन नहीं जा रहे, अज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है कि 90 से 180 दिन वाले जो लोन है उस पर कंपनी ने डिसाइड किया कि 20% मेरे को ईसीएल करना। तो इंडिया से कहता है जैसे आपने 20% ईसीएल बनाया ना, तो 80% लोन बढ़िया हो गया। तो जो 100 रुपीज थे उसको आप 80 पे लिया है, तो 80 इज अ गुड मनी। बैड जो था उसमें बाद जो खराब था आपने उसको अलग कर दिया, एक फ्रूट था उसका जो खराब पार्ट था वो आपने अलग कर दिया, तो बचा हुआ फ्रूट बिल्कुल ईटेबल है, आराम से खा सकते हो आप। तो जैसे ही वो अच्छा लोन हो गया तो कौन सा लगेगा, जो वानी ने कहा एएस वाला, कि गुड लोन इज ऑन अप्रूव्ड बेसिस, बैड लोन इज ऑन कैश बेसिस। बैड लोन मैंने हटा दिया, उस पर कैश पे चलूंगा यहाँ पे भी, जब आएगा उस दिन बात करेंगे। जैसे गुड हुआ तो गुड पे कौन सा लगाना था, एएस वाला रूल, एएस वाला रूल ही इंडेक्स में कंटिन्यू होगा। तो एएस इंडेक्स में फर्क कुछ नहीं है, फर्क है क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन का। वहां या तो खराब ही होता है या अच्छा ही होता है, यहाँ पे एक दोनों हो जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाय डिफॉल्ट अगर नॉर्मल सिनेरियो बात करेंगे तो इंडेक्स में अपफ्रंट ज्यादा इनकम बुक होगी, हम उसका बाद में कम, केस टू केस चेंज भी हो सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता, पर मेजोरिटी केसेस में, क्योंकि मैंने बैड लोन में छोटा पार्ट कम कर दिया, वहाँ पूरे इनकम पे बंद कर देते थे, कैश बेसिस पे करते थे, यहाँ एक पार्ट पे कैश बेसिस करते थे, पार्ट पे अपन फुल लेके आएंगे, तो देयर कैन बी सिनेरियो कि इनकम मेरे को इंडेक्स में अप्रूव बेसिस पे ज्यादा बुक करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू एएस। रेट तो फ्रीज हो गई बेटा, रेट तो बैंक अपन ने ईआर निकाल दी, वो सिर्फ ईआर तभी बंद होगी जिस दिन मैंने उसका लोन का सेटलमेंट कर दिया, बस। बाकी तो रिपेमेंट शेड्यूल फ्रीज हो गया, उसके हिसाब से अपने को इनकम बुक करते चलते। हाँ ईआर तो रेट, इंटरेस्ट रेट फ्रीज हो गया, अब सिर्फ इतना है कि मेरे को निकालनी किस पे है वो इनकम, वो निकालनी है मेरे को गुड पोर्शन पे। तो बैड पे तो खत्म हो गया ईसीएल, बैड पे तो इनकम में बुक करना ही नहीं होगा ना, प्रोविजन बना के चल रहा हूँ तो इनकम थोड़ा बुक करूंगा उस पर। Thank you, sir. The next income we consider is dividend income. It is recognized directly when there is a right
to receive payment is established. So when there is a right to receive the dividend income, it is recognized in the books of accounts. The next is net gain from financial instruments at FVTPL. The instruments which are recognized as FVTPL in case of classification of financial instruments, the net gain will goes into the profit and loss account. The other is rendering of services, the revenue from contracts with customers on the basis of 5-step model, which is determined in case of an Ind AS 115, is recognized by rendering of services. So Ind AS 115 is followed by through booking the income recognition in case of rendering of services. So in case of means of financing, the company enters into transactions like factoring, securitization, and assignment. There are certain words like factoring, securitization, and assignment. Let's discuss about this in brief. सबसे पहले factoring क्या चीज होती है या securitization क्या होता है? NBFCs अपने लोन जो good loans है उनको वो assign कर देती है to some public sector banks or to some public sector institutions. जब वो assignment करते हैं तो DA मतलब एक assignment होता है direct assignment, एक होता है pass through certificate. Both these conditions have that in case of direct assignments, the loan are de-recognized in the books of accounts, and only the asset which is recognized, that is excess interest spread, is booked in the books of accounts. In case of PTC, the loan is not de-recognized in the books of account as the risks and rewards are not transferred with the. समझाने को पहले PTC ने समझाएगी तो क्या PTC का करेंगे लोग? PTC की फॉर्म पता है किसी को? सामने लिखी हुई है इसलिए नहीं लिखी. मतलब क्या होता है? PTC समझा बेटा, बेसिक PTC नहीं समझाएगी. DA क्या होता है? DA बोलो ना आपने. क्वेश्चन तो करो यार, कोई मतलब ही नहीं है. 2 बच्चे करते हैं पूरे साल में एनबीएफसी ऑडिट सिर्फ, बाकी नहीं करते. बाकी को सीखना है तो खुद को ही सीखना पड़ेगा. इसका तो काम हो जाएगा बोल के तो ये तो करीबी है. डबल फायदा है, ये करीबी भी है और इसको टॉपिक भी मिल गया. सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आज की डेट में एनबीएफसी इंडिया में, एज फार एज चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंसेप्ट. सबसे बड़ा एम्प्लॉयर या तो बिग 4 दे रहे हैं 10,000 नौकरी, या उसके बाद एनबीएफसी दे रही है, चाहे वो फिनटेक कंपनियां हो चाहे नॉर्मल एनबीएफसी कंपनियां हो. उतना सा इंटरेस्ट तो अपन भी ले रहे. नौकरियां 50% तुम लोग तो सीए बन के आओगे ना, तो कैंपस में आधी एनबीएफसी आ रही होंगी. पीटीसी कंसल्टेंट को पीटीसी क्या होता है? Basically, there are 2 assignments. बेसिकली एक डायरेक्ट असाइनमेंट होता है, एक पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है. ये दोनों तरीके के असाइनमेंट्स होते हैं. एक जो अपना डायरेक्ट असाइनमेंट होता है, एक बार अपन उसको एक बार समझते हैं ताकि अपन पीटीसी और डिटेल में अच्छे से समझ सकें. डायरेक्ट असाइनमेंट बेसिकली एक असाइनमेंट होता है, इसके अंदर अपन अपने कुछ लोन्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ट्रांसफर कर देते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक नॉर्मल एक कंप्लायंस होती है आरबीआई की, उनको एक प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लेंडिंग करनी होती है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अपना इतना पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना होता है. वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एनबीएफसी को एज अ मीडिएटरी ले लेते हैं, और एनबीएफसी अपने जो लोन एनबीएफसी ने जो डायरेक्टली लेंडर्स को दे रखे हैं अपने लोन्स वो पब्लिक सेक्टर बैंक को असाइन कर देती है. जब वो डायरेक्ट असाइनमेंट कर देती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, तो उसका रिकॉग्निशन एनबीएफसी के बुक्स में इंड एस में भी होता है और एएस में भी होता है. तो एएस और इंड एस दोनों के केस में डायरेक्ट असाइनमेंट डी रिकॉग्नाइज हो जाता है. मतलब लोन्स जो होते हैं जब अपन ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिए तो डायरेक्टली वो डी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 100 रुपीज का लोन था और मैंने मेरा लोन 90% ट्रांसफर कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो 90 रुपीज विल बी डी रिकॉग्नाइज बोथ इन द केस ऑफ एएस आल्सो एंड इन केस ऑफ इंड एस आल्सो. 90 से ज्यादा मैं कर नहीं सकता, इसलिए से 90 वर्ड आरबीआई की रेगुलेशन है. 90% से ज्यादा डीए का ट्रांजेक्शन, तो 90 मेरी बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, और मेरे बुक्स के अंदर 10 का ही एएस में भी रहता है और 10 का ही इंड एस में भी रहता है. दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम होती है, जो मेरा एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड होता है, मतलब इसके अंदर एक और टर्म होता है एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड. वो होता है कि जो मेरा इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी मुझे उस 100 के लोन के ऊपर, वो डायरेक्टली मैं 90% पोर्शन मैं ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर बैंक को दे चुका हूँ,
तो इस वजह से मैं उसकी जो इनकम आएगी मतलब 10 के ऊपर आएगी और जो मेरी अदर इनकम आएगी जो मुझे आगे ट्रांसफर करनी होगी, जो एक्सेस इनकम मुझे मिलती है वो मेरा फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज हो जाती है इन केस ऑफ। बताएगा इस फाइनेंशियल एक्सेस इनकम आएगी कैसे? फाइनेंशियल समझ में आया क्या? फाइनेंशियल समझ में आया क्या? कोई भी जना एग्जांपल से समझा पाएगा? कोई भी एक जना। एनबीएफसी के पास एक लोन है 100 रुपए का, एक लोन मतलब 90% मतलब 90 रुपए उसने दूसरे बैंक को दे दिया, 1% बेच दिया। हाँ ठीक है। तो एनबीएफसी एक्ट में लोन उसका था तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो आप उसका कुछ छूट दो। एक्सेस इंटरेस्ट क्यों वर्ड यूज किया इसने? इंटरेस्ट ही क्यों नहीं वर्ड यूज किया? अपनी वो 10 रुपए की जो आएगी कोई हमें तो वो तो ब्याज ही हो गया ना। फिर एक्सेस क्यों बोल रही है? इंटरेस्ट क्यों नहीं बोल रही है? शायद उसमें ऐसा तो नहीं है कि 90 में 100 पे मैं ले लूंगा पूरा और बैंक को कुछ नहीं दूंगा। सर्विस फीस पे चार्ज करते हैं। तो वो तो पहले दिन लगे, प्रोसेसिंग फीस हो गई। वो तो ब्याज का पार्ट ही नहीं होती। एक्सेस क्यों बोली अक्षता? इंटरेस्ट क्यों नहीं बोली है? ये बता अपने को भी। जो एनबीएफसी ने लोन बांटा वो हायर रेट पे बांटा, जो एनबीएफसी ने लोन बेचा वो लो रेट पे बेचा। एनबीएफसी ने लोन 16% पे दिया हुआ है, जब बैंक को उसने बेचा तो उसने 9% में बेच दिया। तो 7% का जो डिफरेंस है 90 रुपए पे, वो भी बैंक एनबीएफसी का ब्याज है। तो वो एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड है कि मेरे को मेरे तो 16% मिलेंगे, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जो मैंने 90 रुपए का असेट बेच दिया या डीए कर दिया, बेचना वर्ड यूज नहीं करूंगा, डीए कर दिया, उसका जो डिफरेंस ऑफ मार्जिन ऑफ माय इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड टू बी पेड है, दैट इज आल्सो माय इंटरेस्ट, दैट इज एक्सेस इंटरेस्ट। ये तो मेरे को क्या फायदा हुआ? एनबीएफसी क्यों बेचेगी लोन? तो क्या फायदा हो रहा है? मेरे बुक में भी 6% का ब्याज मिल रहा है, वहाँ भी 6% का ब्याज मिल रहा है, बल्कि चला हो गया ब्याज। अगर ऐसे देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेनिफिट में एक फिक्स वैल्यू आउट हो गई मेरी बुक से, तो फायदा क्या हुआ मेरे को? तो मैं क्यों दूंगा? मेरे को ब्याज मिल रहा है, मिलता रहेगा। मेरी इनकम किसी और को दूं, फिर वो पैसे लाऊं और फिर वापस बाजार में बांटूं, फिर वो इनकम कमाऊं, तो अभी कमा ही रहा था। बैड लोन तो बैंक लेगी भी नहीं, गुड ही लेगी मेरे से। तो बुक वैल्यू भी कम करूं, मेरा एयूएम भी कम करूं और पैसे भी नहीं मिले उसके, तो क्या फायदा? प्राइवेट सेक्टर बैंक को क्यों लेता है, मतलब उसको कंप्लायंस के पर्पस के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना वो टारगेट पूरा करना। नेक्स्ट आता है इसमें पास थ्रू सर्टिफिकेट। ये था डायरेक्ट असाइनमेंट। पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के केस में एएस के अंदर सेम ट्रीटमेंट होता है। अगर 100 का लोन है, 90 अगर मेरा चला जाता है तो मेरी बुक से 90 डी रिकॉग्नाइज हो जाता है। लेकिन इंडेस के अंदर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, रिस्क और रिवॉर्ड्स सारे बैंक के पास नहीं जाते हैं। वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एनबीएफसी के पास ही रहते हैं, इसलिए अपन उसको बुक से डी रिकॉग्नाइज नहीं करते। अपन उसको सर्टिफिकेट मतलब पास तो कर देते हैं उस लोन असेट को, लेकिन वो बुक्स के अंदर अपनी लोन असेट रिकॉग्नाइज रहती है, उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो बेसिकली वो पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है और डायरेक्ट असाइनमेंट के अंदर लोन डी रिकॉग्नाइज हो जाता है। और पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एज दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू बैंक्स, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ एनबीएफसीज ओनली। तो इसलिए जो इनकी इनकम होती है डायरेक्ट असाइनमेंट की, और ये था गुड लोन्स के केस में। बैड लोन्स के केस में बैड बैंक्स होते हैं, मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जिसके अंदर अपनी जो बैड लोन्स है, अब मतलब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसीजर होता है। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसीजर के अंदर अपन अपने बैड लोन्स, जो मेरे बैड लोन्स है वो मैं एआरसी को बेच देती हूँ। एआरसी आगे क्यूआईबीज के अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को आगे फॉरवर्ड कर देती है। एआरसी क्या होता है? एआरसी क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म तो पूछ लो यार इससे कम से कम। क्या करती है? जो बैड डेट हो जाता है उसको भेज के उनसे कमाती है। फायदा कैसे होता है? बैंक के खर्चे होते हैं उनको वसूली करता है, वो अपने एजेंट्स को मतलब वसूली वाले अच्छे वसूली करने वाले होते हैं वो लोग, ऐसे पैसे कमाते हैं। यही है ऑब्जेक्ट उसका एआरसी का। बैड डेट्स को भेज के उनसे ही कमानी हाँ, तो मतलब उनके रिकवरी मैकेनिज्म बैंक के रिकवरी मैकेनिज्म से बेटर होता है। वो अज्यूम करते हैं कि जिस कॉस्ट में हम बैंक से खरीदेंगे उससे बेटर रिलेशन हम कर लेंगे,
ये होता है एआरसी का मतलब एक और वर्ड यूज करता है, क्या यूज करता है एआरसी का लगाओगे शॉर्ट फॉर्म में? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। वो तो पता है तुमको तो सब कुछ पता है ना, क्यों भी तो तब आईपीओ लगाते तुम यार पता है उसमें क्यूआईबी का कोटा। तो ये इनकम रिकॉग्नाइज होती है एनबीएफसीज के केस में। क्यूआईबी को क्यूआईबी क्या बोलते हैं वैसे? वही क्वालिफिकेशन क्या होती है उनके पास कि वो क्यूआईबी होते हैं? तो थोड़ा अलग से बात करें, चलो कंटिन्यू। रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग किसी लोन की कब होती है? जनरल सर पास सर्टिफिकेट में थोड़ा बताओगे क्या? फिगर ये है। मेरा तो फर्स्ट नंबर था, हो गया कंप्लीट। पास सर्टिफिकेट में मतलब नाम से तो सर ये लग रहा है कि मतलब अपने जितना भी तो इसका अक्षर तो समझाया नहीं अभी डी ऑफ पास में क्या था फर्क? पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के अंदर बेसिकली अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एनबीएफसी के पास ही रहते हैं। पैसा भी एनबीएफसी कलेक्ट करती है। जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, अगर वो लोन नहीं मिल पाता है, मतलब लोन अपन ने किसी लेंडर को दिया, अगर वो लोन मुझे वापस नहीं मिल पाया, वो बैड डेट्स हो गया, तो सारी रिस्क भी मेरी है। ये केस डीए में नहीं होता है। जब मैंने बैंक्स को, प्रायोरिटी सेक्टर बैंक्स को मैंने जब दिए थे लोन्स, तो अगर कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो वो डिफॉल्ट सारे बैंक के होते हैं, उस परसेंटेज के। फॉर एग्जाम्पल 90% लिया था तो 90% उनके होते हैं। पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के अंदर कुछ डिफॉल्ट होता है या कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो सारे एनबीएफसी को बेयर करने होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते। लोन बैड होगा ना तो डीए में दोनों का होगा, पीटीसी में सिर्फ एनबीएफसी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स। रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली जो अभी अपन ने देखा था, असाइनमेंट और सिक्योरिटाइजेशन, ये पर्टिकुलरली या तो है गुड लोन्स या सिक्योरिटाइजेशन या बैड लोन्स, जिसमें अपन ईआरसी को बेच देते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर होता है कि जो अपन, जिसको अपन ने लेंड किया है, मतलब जो बोरोअर पार्टी है, वो आके हमसे अपना लोन का रीस्ट्रक्चरिंग चेंज करा लेती है। रीस्ट्रक्चरिंग अलग अलग वेज में हो सकती है। रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वेरिएशन आ सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग कभी भी किसी एक सिंगल लोन के नहीं हो सकती। ये बेसिक है। अगर मैं गया अकेला गया बैंक के पास, मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, वो नहीं होगा। हमेशा क्लास ऑफ एसेट का रीस्ट्रक्चर होगा हमेशा, क्योंकि अगर कर दिया तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि मेरा खाता उसी दिन सस्पेंड हो जाएगा। Any restructuring done to a specific person is always tantamount to NPA. एक क्लास नोटिफाई करी कि इस एक्स क्लास के सब लोगों का रिस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे कि कोविड के टाइम करा रिस्ट्रक्चरिंग, तो दैट क्लास इज नॉट tantamount to सस्पेंड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेम चीज यहाँ पे, रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली कुछ कुछ एरियाज की वजह से हो सकते हैं, जैसे ऑल्ट्रेशन हो गया रीपेमेंट पीरियड के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, रीपेबल अमाउंट के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सपोज 20 है, अगर वो चेंज हो गया 25 या 30 हो गया, मतलब इन बेसिस के, इन वेज के थ्रू हमारी लोन अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। इंटरेस्ट लोन देते हैं बैंक, तो जैसे ही रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस आते हैं तो ईएमआई की चेंज होती है ना, तो किसी का तो कोई बैंक तो पीरियड बढ़ा देता है, कोई बैंक ईएमआई वैल्यू बढ़ा देता है, तो दैट इज आल्सो चेंज जो इसने बोला उसमें से, पर वो उसको रीस्ट्रक्चरिंग कह के नहीं कहलाता, क्योंकि वो एक क्लास के लिए पूरा हो रहा है। दैट इज नॉट रीस्ट्रक्चरिंग विद tantamount to सस्पेंड। But the catch over here is restructuring cannot be done for competitive reason. Competition के basis के ऊपर restructuring नहीं हो सकती है। इंडेस कंप्लाइंट एंटिटीज के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग जब भी होती है तो इंडेस 109 लगता है। इंडेस 109 के अंदर एक मेजर पार्ट होता है मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगर मेरा रीस्ट्रक्चरिंग से लोन का इंस्टॉलमेंट या अमाउंट, रीपेमेंट शेड्यूल कुछ भी चेंज हो रहा है, तो मेरा फाइनेंशियल एसेट की आगे के आने वाले कैश फ्लो चेंज हो जाते हैं, इसलिए मेरा मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हो जाता है, तो मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी होती है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज की इंडेस 109 के हिसाब से। सेम चीज जैसे अभी सर ने बताया, कोई भी लोन अगर मैं स्टैंडर्ड लोन को अगर मैं रीस्ट्रक्चर करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाता है और वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाता है। अगर कोई लोन ऑलरेडी एनपीए है तो वो और डाउनग्रेड नहीं होता, वो उसी एनपीए कैटेगरी के अंदर रहता है अगर उसका डीपीडी इंक्रीज नहीं हुआ है, डेज पास्ट ड्यू, मतलब कितने टाइम से वो ओवरड्यू है। अगर वो नहीं रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड का, मतलब जो एनपीए ऑलरेडी क्लासिफाइड है वो एनपीए कैटेगरी में ही रहेगा। अगर वो स्टैंडर्ड है और वो रीस्ट्रक्चर अगर लोन हुआ है तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में इट विल रिमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और द टाइमलाइन दैट द आरबीआई हैज डिसाइडेड। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अभी बानी ने बताया था
कि जो भी इंटरेस्ट इनकम गुड लोन्स के ऊपर होती है वो तो अक्रूवल बेसिस पे होती है, और जो एनपीए वाले पे होती है उसमें कैश बेसिस पे होती है। लेकिन जो लोन्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड थे बट फॉर द पर्पज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग दे हैव बीन क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड, उनकी इंटरेस्ट इनकम की बुकिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है और नॉर्मल बाकी एनपीए लोन्स की कैश बेसिस पे होती है। वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबस्टैंडर्ड होते हैं, बाय नेचर सबस्टैंडर्ड। बाय नेचर सबस्टैंडर्ड। द नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कभी भी फॉरेन से अगर कुछ अमाउंट आता है तो उसके दो रूट्स बताएं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट एंड अदर इज अप्रूवल रूट। Automatic, in case of automatic route, there is no approval required from RBI or government and subject to compliance with prescribed requirements. Means there is no such hard fast compliance in case of automatic route. In case of approval route, prior approval is needed from the government of India or FIPB, DEA. Means these are all the Department of Economic Affairs. These are all the government ministries whose permission is required in case of approval route. Foreign direct investment in case of NBFC is allowed under 100% automatic route. Foreign investment in core investment companies and other investing companies require government approval, and the NBFCs, which are regulated by some financial regulators, it will need to have approval. कौन हो गया? The next thing we considered about after foreign direct investment is external commercial borrowings. जब हमने बाहर से पैसा लिया है, मींस बोरिंग्स अपन ने कंसिडर किए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स लिए, ईसीबीज अंडर ऑटोमेटिक रूट इसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बना दिया है। ECB limits vary from different types for NBFCs, IFCs, infrastructure finance companies की अगर NBFCs हैं या NBFCs of AFC, asset finance company, होल्डिंग कंपनीज और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसके अंदर ECB के गाइडलाइंस है कि $750 मिलियन या इक्विवेलेंट तक तो वो ऑटोमेटिक रूट में है। अगर इससे अमाउंट एक्सीड होता है तो वो डायरेक्टली अप्रूवल रूट के अंदर चला जाएगा, ऑटोमेटिक रूट में नहीं रहेगा। Similarly, for entities engaged in microfinance, the limit is $100 million or equivalent. In the case of other entities, the limit is up to $500 million or equivalent. These limits are for particular financial year. These are not the over the period limit. Above these limits, the route taken will be approval route, and the requirements of the approval route will be taken from Government of India or any other government departments. For example, if an NBFC AFC, means the NBFC AFC limit is 750 million, has to raise an external commercial borrowing under the automatic route, then it can do so up to 750 million. If it wishes to raise more the amount, for example 800 million, then it has to go through the approval route. So this is all from my side. Now Amal will continue. Good afternoon all. Now we will cover operations, governance and the miscellaneous part. Starting with the operations, we will start with the treasury. Before Aman starts, Lalit is in fact there with us. So Lalit ji, would you like to give any other input so far as the discussion is concerned? Sorry, Bhupendra ji. There was some disturbance in the voice. I couldn't get what you said. Yeah, and then I am just asking if there is any input from your side, if you have heard them and. Okay, I think it's going pretty well. There is nothing from my side. Would be happy to participate in the question answer session when it happens, if you have any questions. But I'm enjoying it actually. It's a good refresher for me also. What's happening? So I'm also a student here. Carry on. That's what for me also. Yeah. Please carry on. Now start the treasury operations. NBFCs generally trade in securities. Some NBFCs do trading also. They purchase and sell the financial instruments also with money and securities. So while doing audit, we should check the investment policies, in which the limits, authorizations, and the credit risk what the NBFC can undergo, we should check. And we should also check the risk management policies and the stress indicators which are carried out by the NBFCs.
Now the RBI has given the guidelines in the Master Guideline Direction 2016 that every NBFCs, not every, but the non-systematic important non-deposit taking NBFCs and systematically important non-deposit taking NBFCs. So guidelines on liquidity risk management framework, which are to comply with for every NBFC except the NBFCs with asset size less than 1,000 crore, less than 100 crore. So starting with that guidelines, first of all, every NBFC has a liquidity risk management policy, strategy, and practices which are to be maintained by the NBFC for the liquidity operations. Next, the NBFC is to maintain the MIS, which is for the for the timely and forward-looking information for the liquidity. बोल रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर डिस्क्लोजर का पार्ट है. Yes. वहां से टेकअप किया ना, वहीं से अदर डिस्क्लोजर चालू हो. जितनी लाइनें बोलने वाला है ना, सब कोई भी रैंडम बैलेंस शीट उठा लेना NBFC पीछे से पढ़ना चालू कर देना, इजीली मिलने चालू हो जाएंगे सर. NBFCs में अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए जो कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हो. उसमें मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, मींस द किस टाइम बकेट में कितना पैसा NBFC को रिसीव होने वाला है, जो कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशंस को डिटरमाइन करता है. करेंसी रिस्क और जो NBFCs फॉरेक्स में डील करती है या फिर उसमें करेंसी रिस्क या वोलेटिलिटी एक्सचेंज रेट्स की रिस्क, वो सब भी ऑडिटर को एक बार देखनी चाहिए. उसके अलावा मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स, ये सब ऑडिट करते टाइम आपको देखने पड़ेंगे, जिसमें लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वैसे 100 करोड़ वाली NBFC जिसमें लेस देन 100 करोड़ से ज्यादा उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, बट RBI ने गाइडलाइन दी है कि उनको भी एक बार के लिए फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए. नाउ द इंटरनल कंट्रोल्स वैसे तो आपने किसी ऑडिट पे देखे होंगे, बट इसमें भी आपको ट्रेजरी ऑपरेशंस में इंटरनल कंट्रोल का बहुत ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क होना ज्यादा वो है, सिग्निफिकेंट रिस्क जो कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जैसे कि ट्रेडिंग या फिर जजमेंट मेंटर्स में सबसे पहला और इसमें सबसे ज्यादा है IT डिपेंडेंसीज. NBFCs में IT डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है, और इसमें जो इनके जो ITs वाले होते हैं उसमें कई जगह जनरल कंट्रोल्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. वहां पे आपको देखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो ऑडिटर को डिटरमाइन करते हैं इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है, डाटा कितना रिलायबल है, जो इनको कंट्रोल कर रहा है वो एक्सपर्ट है या फिर नहीं है. ये सब चेक करने के बाद ही ऑडिट फर्दर मूव करना चाहिए. Next is the general audit procedure. Have you covered the recent circular on NBFCs? I think it was in July 2023, where certain mandate was there on the NBFCs to have their IT head also, and then also get their system audited by some IS auditor, IT auditors. So have you covered that? No, sir. Okay. So Lalit, we would like to have, after the class, we would like to have your comment on that particular circular. So you carry on, Aman. Now start with general audit procedures. NBFCs, सबसे पहले NBFC में you should check the volume and the scale of the NBFCs for the purpose of the audit. You can check the completeness of the transaction, proper reconciliations between the front office and the accounting system of opening positions, existence of the outstanding positions at the balance sheet date, third party confirmations, appropriateness of exchange rates, interest rates, other underlying market rates, valuation models and assumptions used in the determination of the valuations of the financial instruments, and the appropriateness of accounting policies used between the hedged and the trading instruments. Now we should cover one more thing, is that NBFCs, different NBFCs launch their new products and services time to time. So this will indicate the risky part on behalf of the in terms of the audit. Audit should initially confirm the predefined procedures which are in place for the launching of new product and their terms and conditions. There is a relevant information system for the and relevant procedures which are documented. Newly traded instruments are only subject to careful review by the auditors. We should obtain the full list or the new product list which are traded during the period of the audit, and also they establish the associate risk profile which confirms the reliability of the internal controls and accounting systems. Now, जो मैंने अभी लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात की थी, उसकी एप्लीकेबिलिटी किन NBFCs पे है, उनमें नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs विद एसेट साइज ऑफ
100 crore and above, systematically important core investment FCCs and all deposit taking NBFCs except Type 1 NBFC, non-deposit, non-operational financial holding company and standalone primary holding company. इसमें जो गाइडलाइंस है उनके उसमें अपन को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में ये सब पता होना चाहिए कि रिस्क कैसे अराइज हुई है, एंटिटी उस रिस्क को कैसे मैनेज करती है और उसका एक्सटेंड कितना है. ये सब देखने के बाद ही आपको अपनी ऑडिट फर्दर कंटिन्यू करनी चाहिए. उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है एट बैलेंस शीट डेट. इसमें अपन को फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या कंट्रोल यूज हुए हैं और उसमें किस जो वैल्यूएशन कर रहा है उसका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस देखना होगा. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन प्रोसीजर में क्या क्या मैनेजमेंट ने अजम्पशंस और प्रोसेस यूज की है. उसका डॉक्यूमेंटेशन जो कि उन अजम्पशंस को सपोर्ट करता हो. कंट्रोल क्या क्या है इनका, टाइमलीनेस या कंप्लीटनेस पे. और रोल ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है वैल्यूएशन पॉलिसीज में, कंफर्मेटरी में और वैल्यूएशन मॉडल्स में. नाउ द क्रेडिट फंक्शन. The credit function involves three things: origination, disbursement, and monitoring of collections and periodic review. Origination, disbursement में अपन को देखना पड़ेगा कि complete information loan applications जो loan applications है उनकी complete information लो और वो borrower है उसका financial status क्या है, loan repayment का उसका source क्या है और जो अपना अपन ने जो उनको fund दिया है उसका intended use क्या होगा. उसके लिए NBFC को related party lendings में भी अपन को इसमें अच्छे से verify करना होगा. उसके बाद planning. Auditor should obtain knowledge and understanding of NBFC method of controlling credit risk. This includes the exposure monitoring process and the system for related party lendings and the NBFC's method for appraising the value of exposures, collaterals, and identifying potentials and definite losses. Now the next is the test of the control. Auditor should obtain knowledge of understanding of controlling credit risk. This includes the portfolio exposures. जो भी NBFC का portfolio उस पे क्या exposure है, characteristic of features, उसका exposure का documentation and what considers the NBFC's procedures and authority levels for granting an exposure. Now the substantive procedure. Auditor should consider the credit exposures. अब इसमें accounts जो एक minimum balance से ज्यादा है या फिर जो अपनी watch list में है और उसमें provision एक specified amount से ज्यादा provision किया हुआ है, या फिर अकाउंट्स जो कि एक डिपार्टमेंट हैंडल करता है जो कि हायर रिस्क पे है, या फिर अकाउंट्स जो कि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जिसमें मोर देन द स्पेसिफाइड पीरियड में स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया है, या फिर अकाउंट्स जो कि ऑथराइज्ड लिमिट से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, या फिर जो प्रॉब्लम अकाउंट जो कि एनबीएफसीज की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने आइडेंटिफाई किए उन सब अकाउंट का रिव्यू, एक्सपोजर फाइल रिव्यू करना होगा उसमें भी और ये सारे अकाउंट्स को उस पे मेन ऑडिट में ध्यान रखना होगा. उसके बाद गवर्नेंस पार्ट. नाउ एवरी कंपनी, जो भी कंपनी है वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ओर ध्यान दे रही है, ये आपने देखा होगा. सबसे पहले जो भी एनबीएफसीज है उसमें अपन को देखना होगा कि बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए पॉलिसी स्टैब्लिश की है या नहीं की, और उस पॉलिसी पे वो फॉलो करते हैं या नहीं है. वैसे तो ऑडिटर के लिए ये कंप्लायंस है नहीं कि अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखे, बट फिर भी इट इज फॉर द गुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द एनबीएफसीज. Now it will start with the audit committee. Every audit committee is the deal with the section 177 of the Companies Act, which will apply. And so अपन को audit committee का जो constructions है उसमें जो members हैं उन सबका review और उसमें जो discussions होते हैं उनका भी review अपन को करना होगा, जो कि अपनी audit में बहुत help करते हैं. Next है internal control over compliances with laws and regulations. अगर laws and regulations का compliance नहीं होता, it will lead to the heavy penalties which will have a material effect on the financial statements. So change in compliance, जो भी changes है compliances में या फिर policy या procedure में, वो सब internal control में ध्यान देने होंगे. और legal, अगर कोई legal matters है तो उसका क्या status है और उसमें क्या unusual items का क्या इन्होंने accounting की है, वो सब इसमें corporate governance में आएगा. Next is the board committee. Board committee में इसमें constitution of 3 committees is required for which is applicable to NBFCs non-deposit taking, systematically important, and NBFCs deposit taking. और इसमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी होता है, वो भी अपन को इसमें ध्यान रखना है. वो एटलीस्ट वंस इन 2 years टू असेस द ऑपरेशनल रिस्क. वो हर एनबीएफसीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, एंड एनबीएफसीज डिपॉजिट टेकिंग. नाउ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स. फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में डायरेक्टर का जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उसकी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया और उनके लिए पॉलिसी है या नहीं, ये सब चेक करना गवर्नेंस में. उसके लिए इसके बाद इसको एनबीएफसी को रिक्वायर होता है कि वो
एक रिजर्व बैंक को क्वार्टरली स्टेटमेंट दे, जो कि सिर्फ फोर्थ क्वार्टर, 31 मार्च को जो क्वार्टर एंड होता है उसी क्वार्टर में स्टेटमेंट जाता है कि चेंज ऑफ द डायरेक्टर्स। और इस और एक एमडी की जो एनबीएफसी का जो एमडी है वहां से भी एक सर्टिफिकेट जाएगा दैट फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ऑन सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हैव बीन फॉलोड। एंड जो स्टेटमेंट है वो रीजनल ऑफिस में विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर अपन को देना होता है। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी। It is same as the section 178 of the Companies Act 2013। इस कमेटी में अपन को वही एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया हुआ है नहीं वो भी इसमें भी देखा जाता है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। To manage the risk management committee shall be formed by the companies with the NBFCs with non-deposit taking systematically important and NBFCs with public deposits as on the date of last financial balance sheet is addressed by the asset liability management committee constituted to monitor the asset liability. Now the next is the asset liability management. NBFCs to form asset liability management committee also in addition to the risk management committee for the management of the asset liability, which will responsible for the risk tolerance limit set up by the board implementing liquidity risk management strategy. Next is the fair practice code. Fair practice code is formed and approved by the, it is to be formed and approved by the board. It is published on the website, in which we can see the how the application of the loan is taken and how what are the terms and conditions, what is the conditions for the disbursement of the loan and the general guidelines. Now the rotation of partner of statutory auditors and audit firm. It is also considered जैसा कि गौरव बहन ने आपको बताया था कि 3 साल में अब तो एमबीएफसी के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि 3 साल में ही 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, तो ये रोटेशन वाला क्लोज इतना वो नहीं है, बट 6 साल के लिए। बट जो एक बार एनबीएफसी जिन पे जो एनबीएफसी ने जो गाइडलाइन इशू की है अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर के लिए वो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द एनबीएफसी नॉन विद असेट साइज लेस देन 1000 करोड़। जिनको ये एप्लीकेबल है उनके लिए जो कूलिंग पीरियड है वो 6 साल का होता है, 2 टर्म का। और ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना होगा। And the next is the risk-based internal audit. Risk-based internal audit is applicable to the all deposit-taking NBFCs, irrespective of their size, and all non-deposit-taking NBFCs, including core investment company with asset size of 5,000 crore and above. ये फ्रेमवर्क इसका इम्प्लीमेंटेशन 31 मार्च 2022 तक हो जाना चाहिए था। अब अपन को ऑडिट करते टाइम रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट भी लेनी है और उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस या फिर रिकमेंडेशंस है वो सभी अपन को अपनी ऑडिट में कंसीडर करने होंगे। Now with the miscellaneous part, we can check the applicability of other laws. Other laws include Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Indian Stamp Act, GST, Insolvency, Bankruptcy Act, Motor Vehicle Act, Negotiable Instrument Act also. Now opening of branches. NBFC can open branches and appoint agent only if we follow the following condition. NBFC should have a certificate of registration from RBI, and if the net worth of the NBFC is up to 50 crore, it can open a branch within the state where it is registered or is situated, and for net on fund more than 50 crore with a credit rating of AA and above, NBFC is permitted to open branch anywhere in India, and NBFC shall notify RBI about its proposal to open the branch. Now, closing of branch. While closing its branch, NBFC should publish such an intention in the newspaper and should notify RBI 3 months prior before the proposed closure. NBFC are required to submit quarterly return on branch within 10 days of the expiry of relative quarter in the specified format. Now, with the NBFC are subject to inspection by RBI under section 45N. तो जो अगर ऐसा इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी जो रिपोर्ट है कंप्लायंस रिपोर्ट वो अपन को ऑडिट करते टाइम लेनी है और उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे कंसीडर करने हैं। NBFCs which are listed are required to comply with the rules and regulation issued by the SEBI. NBFCs need to adhere with the LODR regulation 2015 and disclosure requirements which are applicable to the kind securities listed with. जो अगर इसमें भी SEBI के भी अगर रिपोर्ट हुई है तो भी अपन को लेनी है। अब now ICAI has made an announcement to its members on 18 September 2007 listing out certain irregularities in NBFCs which are required to be reported by auditors. Auditors should be aware of the list of irregularities pointed out by the RBI. Thank you. Yeah, thank you all. I think the topic is very vast and discussions
which Akshita has taken and Aman has done, was very lengthy also. So today we have exceeded our time so far as overall timings for the our Saturday webinar is concerned. But still, I have one thing in my mind about that recent. Also, not able to actually lay my hands on those. But that's you are aware. I think that is a circular related to the appointment of some IT head and then also getting done their IT audits of the NBFCs. Yeah. Gaurav? Yeah. You can open that, but I'll just give you a brief about, you know, I remember having read it when it had been published. See, this is, to my mind, an attempt by the Reserve Bank of India to make sure that NBFCs do comply with IT general controls. And there is the responsibility and governance structure around information technology. Because you know, one thing that, I mean, recent change that has occurred in IT, we'll talk about it, but it's all about making sure that integrity of the data which is there with the NBFC is maintained, whether it is about books of accounts or personal data. So basically, what they have stated is nothing new. All that normally is covered as part of IT general controls. But in India, to my mind, people do not do things unless they are imposed as a law, you know. So yeah. and they are asked to report. So only then people do it, and only then they report it. That's what long and short is. But so had this regulation not been there, most of the IT companies who are evolved, or sorry, NBFC companies who are evolved, would automatically be compliant about all those requirements. Right. And with this Data Protection Act, so maybe if you're auditing Digital data NBFCs, protection. this is DPDP Act which has come in, right? I think this is something new that will become applicable to NBFCs. They will have to really gear up to make sure that they are able to comply with it. So maybe when you are auditing an NBFC, pick this up with the CFO and the board members to say, to check how they are complying with their requirements, you know, which are there in DPDP Act. So that's what it is in the circular, sir. That's what I remember. Maybe, I mean, if there are any questions, we can take. Yeah, Lalitji, I think see, in sometime we face what challenge we face is regarding, again I will come to this data management only regarding you know, these NBFCs sometimes have used data, and to preserve those data for years, because in IT audits as well as for our audit purpose also, as well as books of accounts which are required to be maintained. So there is a lot of you know, requirements under the laws that one has to maintain these for 7 to 9 years, whether or working papers or whether their financial statement with their books of accounts. So Right. because of these used data, sometimes these NBFCs, what they do is that they just you know, extract the data and keep final balances for that particular year with in their system or somewhere in their backup. But if you want to go for the detailed data, suppose a particular ledger account is required to be extracted for a particular borrower, say for 5 years back, if you want to extract, then you cannot extract that, because those informations, because of the you know, limitation on data, they sometimes do not keep. So what is your take on that? Because I feel that that is not the compliance which has been done by the NBFCs, and how should we actually take these things in our audit report? Right.
So a couple of things here which are very important. First thing is the requirement of the company to keep records for a 10-year period, right? Yes. So I think if anybody is destroying any data before 10-year period would be considered as a non-compliance. The only challenge you will have is which section and all, whether it forms part of books of account or not. But I would say it forms part of books and records, which is a larger definition. And books of account also, ledger particularly is something where debits, credits are recorded, right? And which ultimately translates into a trial balance. So to my mind, definitely that preservation has to happen, right? Now, if books of account have been or some ledgers have been deleted or past records have been kept because of the quantum of data, whether it affects your true and fair view on the audit report is a very tricky matter, Binji, because I was examining this audit trail issue, right? Yes, that is Now, again. now auditors are required to report in their audit report whether the company uses an accounting software that has the capability of uh, having audit trail, right? And True. what are the obligations of the auditor if it does not have? Would one go and make an except for statement in the clause where the auditor is required to state whether proper books of accounts as required by law have been kept or not? Because law says the accounting software should have a trail. Your software does not have a trail. Now, what is that you Yes. are going to say? It will not affect your true and fair view because you are still getting all the evidences for the balances, income, expenses. Correct. So it's a tricky question. My first answer to this and first answer to this is that it should not affect your true and fair, right? Yeah. But it poses a bigger risk. And you might feel both are contradictory statements, but when I'm saying it may not affect true and fair because you have done sufficient procedures and you are comfortable about balance sheet and P&L and everything. Correct. Because of space constraint, if they are deleting it, or because of any other reason they are deleting it, deletion tantamounts to non-compliance with law. If they want to be in this business, they should have that capability built in, because then you are partnering with or you are working for a person or for a company which is ventured into a field without being fully equipped to be in the field, right? So it's Correct. like boarding a flight which does not have one wheel. So how will you land or take off properly, right? That is the kind of risk that gets associated when this data is not maintained. The other challenge, I mean, if you have an NBFC which is under Ind AS, which is not having this data, right? There could be So difficulty. There could be ECL. difficulty in validating ECL. Correct. Correct. Historical data is very important there. At least 5 years, Yes. how the accounts are moved. So all these things are to be considered and evaluated. But what you have raised is a very pertinent and difficult question to answer. Yes. Yes. So I think it's now actually time to conclude because though there may be some more questions also, but I think now it is better to close. So thank you, Lalitji. Thank you for, I think, sparing almost 2.5 hours for our class, rather three. Yes, 2.5. And it was really very enriching from your side. So thank you so much. We can now Thank conclude you. on this. Yeah, thank you, Bhupendraji. Thank you, everyone.
Yes. All the best to all of you. Take care.